राइट। एक सेकंड, मैं दूसरे सिस्टम से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे चार्ट्स हम लोग ओपन कर सकते हैं। जो करना कर दे, ये अनलिमिटेड सेशन मैंने बुक किया जूम का, इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। मेन हमारा गोल रहेगा यार कि एटलीस्ट टू स्पाई ऑन एसडेक पे फोकस करे, कि बता सकता है कि क्या चल रहा है अभी इस वीक, क्या मेरे को क्या ट्रेंड लगता है तेरे को कि ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, पास देख के, जोन देख के, सपोर्ट्स इन। राइट राइट, बस एक मिनट। देखना नेक्स्ट टाइम से कोई टाइम ऐसा सेटअप करे जिसमें तेरे को भी कंफर्टेबल हो, हमारे को भी कंफर्टेबल हो, और वीकेंड हो सकता है, बहुत अच्छा है। या फिर कुछ ऐसा कोई टाइम, मेरे को तो ये टाइम बेस्ट सूट करता है। अन्नी तेरे को सूट करता है क्या? Yeah, maybe fine for the few days, right? हाँ Because the training is going to be हाँ for 4 or 5 days हाँ last time. हाँ। ये दर्शन कौन ज्वाइन किया है? मैं ही हूँ, मेरा ये हो जाए, ये कर लें। अच्छा ओके ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू पे कर रहा है क्या? हाँ, ट्रेडिंग, यस। आवाज आ रही है? हाँ, एक को म्यूट करना। तो ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू क्या है? इज इट a ट्रेडिंग free website हाँ, or free ट्रेडिंग व्यू tool? इज लाइक अ स्टॉक चार्ट्स और याहू फाइनेंस। अभी लेटेस्ट सबसे ज्यादा ट्रेडिंग व्यू ही चल रहा है, tradingview.com। Okay, free है क्या वो? हाँ फ्री है। उसमें एक चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़े इंडिकेटर्स डालने के लिए थोड़े पैसे लगते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाएगी। अभी ये दिखाएगा, विनायक स्क्रीन शेयर करके दिखाना हमारे को ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ओके। ओके, तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी तो ट्रेडिंग व्यू खोलना हम यहाँ से। हाँ बस चालू करिए। राइट। अब इस पे तो तू एक स्क्रीन बार दिख रहा है, राइट? होल्ड ऑन, मैं यहाँ से इको किसका आ रहा है ये? इस पे स्पाई को ले ले एक बार, सबसे स्क्रीन पहले कर हमेशा दिया स्पाई को ही फोकस करते हैं। आवाज भी आ रही है, स्क्रीन दिख हाँ रहा है, करेक्ट? हाँ हाँ, ओके ओके, परफेक्ट। तो सो दोस्त हु डू नॉट नो, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री सॉफ्टवेयर है, राइट? और ये पूरा वेब बेस्ड है। फ्री यानी काफी फीचर्स इसमें फ्री है, अगर लेकिन इसका प्रो वर्जन भी आता है अगर कुछ एडवांस आपको फीचर्स चाहिए तो। लेकिन टू गेट स्टार्टेड विद इसका फ्री वर्जन भी काफी है, राइट? ठीक है। अभी स्पाई Hey, पे your चल। your voice is low, bhai. Can you bring that laptop closer to you? Yeah. Is it okay now? हाँ Kind of. मेरे को आने तो सही Yeah. आ रही है, नहीं आ रही है? Yeah. And go ahead. Okay. Okay, great. ठीक है। हाँ So let's start with SPY, सबसे correct? मेन स्पाई पे फोकस करते हैं। इसका 1 ईयर का चार्ट हमारे को, जिसमें 4 जो है ना स्पाइक आए थे इस साल में, अभी तक 4 स्पाइक आए और 4 बॉटम आए। वो कैसे समझाना है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वो एक बार सबको समझाएगा तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Right. So before like everybody knows कि मुझे पता होना होगा कि like आज तक आप लोगों ने कैसे ट्रेड किया है? Like how familiar you are with the charts or technicals? Any one of you? सबको, किसी को कुछ नहीं आता है। लेट्स स्टार्ट। नोबडी सी द 1 डे कैंडल, 4 डे कैंडल। Okay. Yeah. कुछ भी नहीं. Just think about that we are basic and we don't know anything.
तू ये ट्रेंड लाइन बना के सबको दिखाएगा. Nobody knows 1 day candle, 4 day candle, 5 minute candle, 1 day candle. So start everything that we don't know anything. Okay, okay. So initial अभी आज के दिन पे we'll just focus on कि what exactly are these charts, right? How these are made. So the way मैं आपको सिखाऊंगा which is comfortable to me is I'll explain you the logic behind this. Why exactly these kind of charts form, right? Instead of just having the idea that either sell करना है, either buy करना है, what exactly is the reason, right? कि यहाँ पे हम लोग क्यों sell कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्यों buy कर सकते हैं, right? तो बेसिकली इफ एवरीबॉडी नोस कि ई चार्ट्स में भी अपने को मिल जाता है, सॉरी ई ट्रेड में भी मिल जाता है आपको, ट्रेंड स्पाइडर जिसने यूज किया उसमें मिल जाता है. तो ऐसे कुछ चार्ट्स बनते हैं, राइट? दैट इज फॉर एवरी स्टॉक, एवरी इंडेक्स, राइट? एंड सिंस आई एम अज्यूमिंग कि नोबडी हैज मच नॉलेज अबाउट इट, सो बेसिकली द चार्ट्स अगर आपने यहाँ से क्लियरली देखा, हम लोग लास्ट एक ईयर का देखेंगे, ठीक है, लास्ट नवंबर से अब तक का. तो बेसिकली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, या तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर लो, या फिर ट्रेंड स्पाइडर यूज कर लो, राइट? या फिर अपना ई ट्रेड जहाँ पे आपका ब्रोकर का अकाउंट है, हर जगह आपको ऐसे चार्ट मिलेंगे. मोस्टली याहू फाइनेंस सब यूज कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज फेमिलियर टू याहू फाइनेंस, तो उसका चार्टिंग भी बहुत अच्छा है. ठीक है, करेक्ट. लेकिन अगर चार्टिंग में ये वाली चीज जो तू सिखाएगा ना अभी, देख वो जो लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. करेक्ट, करेक्ट. ये राइट हैंड साइड वाला बंद कर देगा. कौन सा ये वाला? हाँ, ये वाला सब राइट में जो भी है, या मिनिमाइज कर दे इसको. हाँ ठीक है. तो अभी बेसिकली जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ये जो चार्ट्स है, राइट, जो लास्ट अगर यहाँ से पकड़े मार्च से लेकर के अब तक नवंबर तक, लास्ट एक डेढ़ साल का जो भी अभी यहाँ पे चार्ट है, राइट, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम अपना है वो 1 डे का है, राइट? ये टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो, अगर टाइम फ्रेम को, अगर ये टूल को अगर आपको यूज करना है, तो बेसिकली ये टूल अगर आपको बताता हूँ मैं, बेसिकली ये है टाइम फ्रेम, राइट? टाइम फ्रेम इंडिकेट्स कि ये जो कैंडल है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल, कैंडल फिक्स, करेक्ट? ये जो कैंडल का है, जो डे से लेके डे एंड तक है, ये जो पूरा एक दिन का कैंडल है, 1 डे कैंडल इंडिकेट्स ये पूरा एक दिन का कैंडल है. इफ आई मेक दिस 15 मिनट्स, तो एक कैंडल हो जाता है ये 15 मिनट वाला, ठीक है? एंड रीजन बिहाइंड दिस कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, लाइक आई यू आर एन इन्वेस्टर, इफ यू आर अ डे ट्रेडर, तो आप कम से कम टाइम फ्रेम पे करोगे, क्योंकि आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का मूवमेंट आपको जानना होता है, राइट? बिकॉज यू आर अ स्कैल्पर और क्विक ट्रेडर, तो उसमें 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का जो भी मूवमेंट है आपको पता करना होता है, इसलिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो. एंड वन वी गो टू द 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सो बेसिकली ये होता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए. तो ट्रेडर्स के मोस्टली 2 टाइप्स रहते हैं. वन इज अ स्कैल्पर, उसको हम लोग डे ट्रेडर भी बोल सकते हैं, जो इंट्राडे में जो भी कॉल्स पुट्स या फिर जो भी स्टॉक देता है इंट्राडे में बेच के निकल जाता है, राइट? वो डे ट्रेडर. एंड देन देयर इज अ पोजिशनल ट्रेडर, जो लॉन्गर टर्म्स के लिए होल्ड करते हैं, बड़े प्रॉफिट्स के लिए या फिर बड़े स्टॉप लॉसेस के लिए, राइट? तो जो आप काइंड ऑफ लोग करते हो कि आपको रिजल्ट बेस पे ट्रेडिंग करते हो, करेक्ट? रिजल्ट बेस पे या फिर आने वाले आगे वाले वीक पे, वीक का आपको जो प्रेडिक्शन लगता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट्स रहते हैं 1 आवर का, 4 आवर्स का और 1 डे का, राइट? तो ये एक कैंडल जो है वो इंडिकेट करती है पूरे दिन का मूवमेंट, कि पूरे दिन में कितना मूवमेंट था इसमें, राइट? जिसका हाई, इसमें अगर आप देखोगे इसका आपका ओपन दिखेगा, इसमें आपको हाई दिखेगा, लो दिखेगा हर कैंडल का, करेक्ट? तो ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें. तो ये जब हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम इसमें चूज करते हैं, तो इसमें हम लोग कल के लिए नहीं देखते कि कल स्टॉक में क्या होगा, ये नहीं देखते. मोस्टली जब हम लोग डे का देखते हैं तो वीक के हिसाब से, 2 वीक के हिसाब से, 3, एक ब्रॉडर व्यू दिखता है इसमें, करेक्ट? कि अगले 3 वीक्स में क्या हो सकता है, ये स्टॉक्स का मूवमेंट देख के, पिछले वाले चार्ट को रीड करके, ठीक है. ओके? तो ये है डे वाला है, इसमें 15 मिनट है, 30 मिनट है, 45 मिनट है, डिपेंडिंग आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आप इसमें अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, राइट? दीज आर कॉल्ड टाइम फ्रेम्स, स्टार्टिंग टाइम फ्रेम्स, ओके? द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कैंडल्स, बट मोस्टली इसमें बार, फॉलो कैंडल्स वगैरह इसका कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं होता है. मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो सिर्फ कैंडल्स पे ही फोकस रहते हैं, तो हम लोग भी इसी पे सारा चीज समझेंगे, ठीक है? एंड देन इंडिकेटर जो आपने बताया थे ना सर, जो आपको चाहिए था, सिंपल मूविंग एवरेज, राइट? वीवैप क्या होता है, बाद में क्या होते हैं, ये लोग हम लोग बाद में सीखेंगे, राइट? ये सब बाद में सीखेंगे. एक बार तू बेसिक ये बता सकता है कि पैटर्न कैसा बन रहा है लास्ट 1 साल का? करेक्ट, करेक्ट.
तो बेसिकली अगर ये जो है कैंडल स्टिक्स, अगर यहाँ इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग मेन जान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। एवरी स्टॉक उसी से भागता है, बिकॉज एट द एंड प्राइस इज समथिंग दैट एवरी इंडिकेटर रन्स बिहाइंड, राइट। एंड सारे इंडिकेटर, सारे हेज फंड्स वो प्राइस को ही फॉलो करते हैं, राइट। क्योंकि पूरा गेम जो रहता है स्टॉक मार्केट में, व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माय जर्नी इज ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स, ओके। इसमें और कुछ इमोशंस किसी का मोस्टली कुछ नहीं रहता, सारा गेम रहता है बायर्स एंड सेलर्स का। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कहाँ बायर्स इंटरेस्टेड है और कहाँ सेलर्स इंटरेस्टेड है, राइट, इन द मार्केट। और ये हमको पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। So basically, what is support and what is resistance? Is basically demand and supply zone. उसको demand and supply zone भी बोल सकते हैं, right? कहाँ पे demand है और कहाँ पे supply है? Correct, agree. Right. So basically resistance ये होता है कि जहां से भी मान लो स्टॉक आपका अगर इस तरीके से कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, तो जहां कहीं से भी प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, करेक्ट, जहां कहीं से भी सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, जहां कहीं से भी प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जोन स्टॉक में। जहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है कोई स्टॉक में, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स पकड़े तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ तक गया स्टॉक, यहाँ से रिवर्स आया, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि उसका हाई जो है वो पिछले वाले हाई से ऊपर होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये होता है ट्रेंड। ये दो ट्रेंड हो सकते हैं मार्केट में, ये दो ट्रेंड चलते हैं नॉर्मली, और तीसरा जो होता है साइडवेज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है बेसिकली कि इसको हम लोग हायर हाइस भी बोल सकते हैं, कि लास्ट जो हाई था, राइट, पर्टिकुलर इंडेक्स हो स्टॉक हो, उसका नेक्स्ट हाई उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और उसका नेक्स्ट वाला उसके ऊपर। तो जब तक ये वाला पैटर्न चलते रहता है मार्केट में, हम लोग ये सोचते हैं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, करेक्ट, क्योंकि इसमें हायर हाइस बन रहे हैं। जो प्राइस रिजेक्ट हो रहा है वो हायर लेवल्स पे हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो बेसिकली जो है अप ट्रेंड है, करेक्ट। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये अप ट्रेंड क्यों है? क्योंकि इसका जो प्राइस है, जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हो रही है, करेक्ट, वो ऊपर के लेवल से बन रही है, ऊपर के लेवल से बन रही है, ऊपर के लेवल से बन रही है। ये होते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। जहां पे सेलर्स को लगता है, बेसिकली बायर्स को लगता है कि ये प्राइस फेयर है, यहाँ पे भी बायर्स को लगा ये प्राइस फेयर है टू परचेज, बायर्स को लगा ये प्राइस फेयर है टू परचेज, यहाँ पे भी सेम सेलर्स को लगता है कि दिस इज ओवर वैल्यूड हियर, ओवर वैल्यूड हियर, ओवर वैल्यूड हियर, कि मार्केट ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है एंड इट शुड फॉल, इट शुड फॉल, करेक्ट। सो जो मेजर रेजिस्टेंस रहते हैं, मेजर सपोर्ट जोन रहते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी रहते हैं उसके पीछे। ये यहाँ पे देखना कि मार्केट अगर यहाँ पे जो मेजर सेल ऑफ आया वो 450 के आसपास आया, राउंड फिगर जो नंबर्स रहते हैं 450, 400, 300, 350, करेक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल्स रहते हैं। जैसे कि अभी ये देखना यहाँ पे भी 400 है, 400 के लेवल्स है, तो यहाँ पे बायर्स भी उतने ही साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं कि 400 अगर तोड़ेगा तो 400 ऊपर जाएगा, एंड सेलर्स का भी यही पे माइंडसेट रहता है कि 400 हो गया और कितना ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर तो वो एक बार यहाँ जो है ना, जैसे ये तूने लाइन दो बनाई है ना, इसके बीच में पुराना 400 का 6 में एक ने का है, देख के बता एक बार कि 400 से ये 400 देखना, तक ब्रोक करने के लिए क्या चाहिए अब उसको। ये देखना, ये 400 का पॉइंट है, करेक्ट, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ से पूरा स्ट्रेच हुआ मार्केट, अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा थिंकिंग कि 400 से कितना ऊपर जाएगा, द वे मार्केट ट्रैप से सीधा ऊपर खुल जाता है एंड फिर यहाँ से भागता है, अनुरोध समझ अगर में उसको आया? ऊपर जाने का होगा तो, राइट। बिकॉज एज आई सेड, अगर मार्केट में अगर पूरा गेम समझना है तो सिर्फ यहाँ ये समझना होगा मार्केट में कहाँ बायर्स इंटरेस्टेड है, कहाँ सेलर्स इंटरेस्टेड है, राइट। और जो भी स्ट्रॉन्गर साइड होगा हमको उस बस में जाके बैठना है, इट्स सिंपल इज दैट। सारे चार्ट पैटर्न्स बस हमको ये इंडिकेट करते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट एनालाइजिंग द हिस्ट्री एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हाट कैन हैपन नाउ, राइट। एंड उसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, मान लो अगर कोई हेज फंड बाय कर रहा है, कोई ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट बाय कर रहा है, राइट, व्हाई दे आर बाइंग और व्हाई दे आर सेलिंग, और वो यहाँ पे क्यों बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, दैट्स व्हाट ऑल वी वांट टू नो, राइट। सो बेसिकली सपोर्ट जोन अगर यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ करने जाए तो सपोर्ट जोन वो होता है जहां से प्राइस नीचे से रिजेक्ट करता है, जहां से बायर्स प्राइस को पुश करते हैं ऊपर,
जैसे कि लेट सपोज अभी ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जोन है पूरा, ये जोन में क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, रुका, यहाँ से वापस गया, आया, वापस रुका, ऊपर गया। दैट मीन्स ये पॉइंट बायर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग और बायर्स वर वेरी फर्म की प्राइस ये बहुत फेयर है फॉर दिस मोमेंट, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, तो दे पुश द मार्केट, राइट। एंड जब भी डाउन ट्रेंड शुरू होता है, यहाँ से देखना है, जब भी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये वाला पॉइंट, करेक्ट, यहाँ से सेलर्स ने कंटिन्यूसली इसको डोमिनेट किया। जब भी प्राइस इसके ऊपर जाने का ट्राई करता, सेलर उसको नीचे पुश लेके आते हैं, बायर्स ट्राई करते हैं, जहां पे बायर्स में वीकनेस दिखे वहां पे सेलर्स का डोमिनेंस ज्यादा होता है इन द मार्केट। तो बेसिकली जो प्राइसेस जहां पे रिजेक्ट हो रहे, नीचे से रिजेक्ट हो रहे, वो सपोर्ट जोन है, और जहां से प्राइसेस ऊपर से रिजेक्ट हो रहे वो रेजिस्टेंस जोन है, करेक्ट, वो रिजेक्टिंग जोन है। तो ये जो पॉइंट रहता है, ये पॉइंट रहता है सेलिंग का, ये पॉइंट रहता है बाइंग का, बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी देखना ये सेम लेवल है, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखोगे, जो लास्ट ईयर का सपोर्ट था, राइट, इसी लेवल से वापस यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ये लेवल्स पे भी सपोर्ट लिया, अनिरुद्ध करेक्ट। समझा देख, 370 हम्म 350 ये सब पुराने जो डेटा है ना, लास्ट 2 साल के 3 साल के, एवरीथिंग चार्ट फॉलोज द लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर। मेटा का एग्जांपल ले ले, अमेजोन का एग्जांपल ले ले, 90 पे से मुड़ गया, गूगल का एग्जांपल ले ले, 90 पे से मुड़ गया, तो ऑल आर फॉलोइंग द हिस्ट्री। या जेम्स, हाँ आगे ये अच्छा समझ में आया। अब आगे, अब देख आगे देख, पहले की पीक था अपना 470 और 370 एक बॉटम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक 390 है। ये तीन मेरे को बहुत साइकोलॉजिकल नंबर पता है स्पाइक है, 370 350 और 390। ये तीन जो है ना बहुत क्रूशल है इस साल के पूरे साल से। करेक्ट, 390 पे क्या हो रहा है, क्या ये हुआ, बताएगा व्हाई वर यू पिकिंग 390? 390 जैसे अभी लास्ट वीक जो था ना 390, वो बुल और बेयर का सपोर्ट है। जैसे धीरे धीरे अनिरुद्ध ऐसा क्या होता है, जैसे 380 तोड़ गया तो 390 बन गया, अब 390 एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया बेयर और बुल का। उसमें क्या होता है कि अगर 390 के ऊपर रह रहा है तो बुल के पास है, 390 के नीचे रह रहा है तो बेयर के पास है। ये चीज समझा सकता है कि कैसे वो 390 है, और थ्री मतलब कैसे वो 400 तोड़ेगा और 390 नहीं तोड़ना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी बेसिकली मैं बस ये कंसिडर कर रहा हूँ कि सबको मोस्टली एटलीस्ट कैंडल स्टिक्स पता होंगे, राइट, उसी बेस पे मैं सारा चीज बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एकदम स्क्रैच से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं सारा हाँ चीज, हाँ हाँ, तो एक बार चालू राइट। कर जिससे कि समझ में आ जाएगा। फिर 10-15 क्वेश्चंस होंगे, फिर हम अपने हिसाब से पढ़ाई करके तेरे से पूछेंगे कल से। बिल्कुल बिल्कुल। सो डिमांड जोन क्या है, डिमांड जोन वो जोन है जहां से बायर्स ये थिंक करते हैं कि ये प्राइस, दिस प्राइस इज फेयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट रहते हैं। नाउ देयर इज एक लॉजिक ये भी है कि ऐसा क्यों, कि इसी इसी जोन से क्यों वापस जा रहा है मार्केट, करेक्ट। क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा हेज फंड है, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई एचएनआई है जिसका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, राइट, जो कि स्टॉक मार्केट में काफी एक्टिव है, कैन बी अपना वॉरेन बफे हो सकते हैं, या फिर रे डालियो, जो भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मान लो इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक एट दिस प्राइस, ओके, दे विल मेक श्योर कि उनका प्राइस नीचे ना जाए, उनका जो बाइंग प्राइस है, बिकॉज अगर वो ये प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे, दे आर फॉर द लॉन्गर प्रॉफिट, करेक्ट। तो स्टॉक इतना नीचे आता है तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज एट द एंड all big investors know that market is not going to be zero, correct, because the basic nature of any stock market is to go up. अब वो डिपेंड होता है कि आप कब तक होल्ड करके रख सकते हो, ये इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं। अगर आप इंडेक्स का देखोगे, हिस्ट्री देखोगे उठा के, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी स्टॉक मार्केट हो, राइट, कोई भी इंडेक्स हो, उसकी अगर हिस्ट्री देखोगे, उसका नेचर है ऊपर जाना, नीचे आना नेचर नहीं है। नीचे वो मोमेंटम की वजह से आता है, जैसे कोविड में नीचे आया, करेक्ट, यहाँ पे भी डिप आया, यहाँ पे भी डिप आया। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट, उनको बाय करना है डिप पे, बिकॉज वो ये जानते हैं कि मार्केट का नेचर ऊपर जाना है, नीचे आना नहीं है, और मार्केट नीचे आएगी तो सभी कुछ डूब जाएगा एक साथ, ऐसा पूरा इकोनॉमी डूब जाएगी। सो एवरीबडी इज बेटिंग ऑन इकोनॉमी, राइट। तो ये नीचे आ सकता है, 200 भी आ सकता है, लेकिन ये जाएगा जरूर ऊपर, ये वापस 479 तोड़ेगा। तो ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, राइट, डिमांड जोन दिख रहे हैं, उसके पीछे का बेसिकली लॉजिक ये होता है कि मान लो कोई बड़ा हेज फंड है, या फिर कोई बड़ा नेटवर्क जो है जिसकी उसने बाय कर रखा है,
वो मेक श्योर करता है कि उसका एवरेज डाउन ना हो जाए स्टॉक, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, ये कोई रिटेल ट्रेडर्स का मूवमेंट नहीं है, रिटेल ट्रेडर्स ये मूवमेंट नहीं लेके आ सकते, ये मूवमेंट के लिए चाहिए हेज फंड का पैसा, बड़ा पैसा, राइट। ऐसा होगा नहीं कि 100 लोगों का ग्रुप मिलके कुछ $1 मिलियन डाल देंगे और ये मूव आ जाएगा, नहीं, इसके लिए 100 बिलियन ऐसा कुछ पैसा लगेगा इसको यहाँ तक भी हिलाने के लिए स्टॉक को, राइट। तो ये मूवमेंट उनसे आता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनके बाइंग प्राइस पे वापस आता है, वो दे स्टार्ट परचेसिंग इट अगेन, अगेन परचेस करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो उनका पुश मिलता है, ये रिटेल ट्रेडर्स का पुश नहीं है, ये जो हेज फंड्स है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उनका पुश है मार्केट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे स्पाई 348 गया था 15 दिन, 1 महीने पहले 12 अक्टूबर को, तो उन्होंने एकदम से पुश कर दिया था। अगर तू देखे तो सितंबर और नवंबर के बीच में जो एक कैंडल बनी है, ये वाली इसके पास में, हाँ ये वाली ग्रीन कैंडल जो दिख रही है राइट हैंड साइड में, ये वाली, हाँ ये इसके जस्ट जो नीचे जा रही है ग्रीन, थोड़ा सा नीचे गई है लेफ्ट हैंड साइड में, 12 अक्टूबर वाली, ये देख ले 348, वो एक सेकंड एक दिन के लिए गया था। यार पर ये कैसे पता लगता है कि बायर्स, आई थिंक द फंडा इज हाउ कैन वी नो कि बायर्स कहाँ बैठे हैं और सेलर्स कहाँ बैठे हैं। जैसे हेज फंड का प्राइस क्या है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल हेज फंड विल बाय स्पाई एट व्हाट प्राइस, राइट, वो कैसे पता लगेगा? राइट, सो ऑल द हेज फंड्स, राइट, ऑल द बिग मनी, दे प्ले विथ रिटेलर्स इमोशन, राइट। जहां पे रिटेलर की हिम्मत खत्म होती है, वो वहां पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। क्योंकि रिटेलर्स जैसे आप हैं, मैं हूं, हम लोग यहाँ नहीं परचेस करेंगे, वी विल बाय समवेयर हियर, जब हमको फोमो आता है, करेक्ट, कि स्टॉक इतना भाग गया, नाउ वी थिंक यहाँ से और भागेगा, इट्स देयर वे टू गेट आउट फ्रॉम हियर, और मे बी यहाँ से वो लोग और मार्केट को पुश डाउन करते हैं कि यहाँ पे जो लोग रिटेल लोग आए हैं, उन्होंने जो स्टॉक लिया है उसको हम लोग कम प्राइस में परचेस करते हैं। कोई इफ देयर इज वन स्टॉक, राइट, नहीं, पर हम लोग को क्या मालूम कि हेज फंड का एवरेज कितना है? वो लोग लेट्स से उन लोग स्पाई में घुसे हैं 200 पे घुसे हैं, हाँ, वो कैसे पता लगेगा कि वो लोग उनका एवरेज कैसे कितना है? या चार्ट से पता लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। देखना यहाँ पे जो रिजेक्ट प्राइस का आया है, रिजेक्शन, राइट, कंफर्मेशन कहाँ से आता है, पहले यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये प्राइसेस रिजेक्ट हुए, करेक्ट, यहाँ से अभी अच्छा, ओके, जो मतलब जो टिप बने हैं वहां से रिजेक्ट हुए सारे। तो रिजेक्ट हुए यहाँ का मतलब बेसिकली इसको कंफर्मेशन हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं, करेक्ट, यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग एक्टिविटी हुई है, करेक्ट। तो बाइंग एक्टिविटी जहां से हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई आया है, वी डोंट नो, हेज फंड रहेगा, कोई भी रहेगा, बट यहाँ पे एक बहुत लोगों ने स्टॉक लिया हुआ है, करेक्ट। अगर यहाँ से पुश मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ पे बहुत लोगों ने लिया हुआ है। तो जब भी इनके सपोर्ट से स्टॉक नीचे गिरते हैं तो तेजी से गिरते हैं, करेक्ट, क्योंकि बहुत लोगों के क्या होते हैं, स्टॉप लॉसेस लगे रहते हैं मार्केट में, और पूरा मार्केट चलता है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, पूरा मार्केट चलता है स्टॉप लॉस हंटिंग की स्ट्रेटेजी पे, राइट। क्योंकि ये इन्वेस्टर्स नहीं बनाते, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर देखो, इन्वेस्टर्स तो स्टॉक बेच नहीं सकते, करेक्ट। एक बार लिया है तो ऐसा तो नहीं होगा वो लोग आज रोज बेचेंगे, रोज देंगे, रोज बेचेंगे। तो ये जो करते हैं, ये होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये चार्ट वो लोग बनाते हैं। जो इन्वेस्टिंग करना है वो यहाँ पे पैसा लगा के सो जाएगा, बराबर, तो सही बोला। तो नहीं निकालना, वो रोज लेके बेचेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो ये चार्ट नहीं बनाएगा, ना ही उसको इंटरेस्ट है कि ट्रेडर्स लोग क्या कर रहे हैं। उसने इधर मान लो 100 बिलियन लगा लिया, तो वो रोज कल जाके वो 150 बिलियन में नहीं बेचेगा, या बराबर ऊपर बोला। के निकल जाऊंगा, नहीं, वो यहाँ पे हजार के लिए बैठा है, 10,000 के लिए बैठा है, करेक्ट। तो ये ठीक जो है, मूवमेंट है, ये इन्वेस्टर्स नहीं लाएंगे, वो लोग स्टॉक को लेकर परचेस करते हैं, होल्ड करते हैं, और वो तब तक होल्ड करते हैं, उन लोग को इससे मतलब नहीं है ये स्टॉक कितना परसेंट नीचे गया, जब बिजनेस का फंडामेंटल खराब हो जाएगा वो बाहर निकल जाएंगे, उनका सिंपल लॉजिक। ठीक है क्योंकि उन यार। लोगों ने अभी वो अभी 396.03 पे क्लोज हुआ स्पाई, तो वहां से कैसे पता लगेगा कि अभी कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? वो कैसे पता लगता है? सो लेट्स से मैं आज दुकान खोल के बैठा, बोला कि ठीक है आज का प्राइस है 396.03, अब आज से कहाँ स्पाई जाएगा वो कैसे पता लगता है? जैसे तूने चार्ट निकाला, ठीक है, अभी तूने बोला कि ठीक है यार आज बैठ के आज डे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और दुकान खुला आज जो भी है लेट्स से 396.03 पे ही खुला, तो
तो फिर बाद में आज के दिन में मतलब ट्रेड करना है तो क्या कैसे करेंगे? कॉल लेंगे, पुट लेंगे या स्टॉक लेंगे? कैसा पता लगेगा कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मतलब जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं वो what should we look at when we trade? When we look at the chart, what should we look at? Let's say हम लोग डेली ट्रेड करेंगे तो हम लोग सिर्फ डेली चार्ट देखेंगे या वीकली चार्ट देखेंगे या या 15 मिनट देखेंगे या 3 मिनट देखेंगे या 1 मिनट देखेंगे या कैसे? क्वेश्चन ये है विनायक, इसका क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक याद है फ्राइडे को तूने मेरे को मेटा में निकलाया था, बोला था कि सर 112 13 हो तो निकल जाना, 114 हो तो स्टे रहना, वैसा वो स्पाई का पूछ रहा है। यस, सो ये जो कंसेप्ट है ये है डे ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है सर। जो कंसेप्ट आप मुझे बता रहे हो ना सर, दिस इज ऑफ डे ट्रेड। क्योंकि अगर दिन का अगर चाहिए सेम, अगर आप स्टॉक को होल्ड करने वाले हो कम से कम 1 महीने के लिए, 15 दिन से लेके 1 महीने के लिए, या फिर मान लो 10-15 दिन से लेके 1 महीने के लिए, ठीक है, तो आप देखोगे 1 डे का टाइम फ्रेम, क्योंकि उसमें पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी। और इससे भी आपको और ज्यादा नैरो डाउन होना है। नैरो डाउन हम लोग क्यों होते हैं सर? क्योंकि हमारी एंट्री परफेक्ट रहे। कि अभी मान लो ये दिन का कैंडल है, राइट, लेकिन मुझे एंट्री इसके लो पे चाहिए, तो अभी दिन का कैंडल देख के नहीं पता पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 15 मिनट की कैंडल में जाऊंगा तो मुझे नीचे मिल जाएगा ये। तो इस ग्रुप में ऐसे कोई भी नहीं है जो 10 दिन से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं। वी आर ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो हमारे को कितने 15 मिनट की साइकिल पे या 1 दिन की साइकिल तो हमारे लिए है ही नहीं। अच्छा। हम सब ऑल इम्पेशेंट ट्रेडर्स है, ट्रस्ट मी। सुधरना पड़ेगा रे भाई तेरे को। नहीं, सी ऑप्शंस को लेके ना, मैं एक्चुअली पहले वही सेशन लेने वाला था, लेकिन अगर आपको ये टेक्निकल का चाहिए तो विल स्टार्ट विद टेक्निकल, लेकिन ऑप्शन के ऊपर विल हैव वन सेशन, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कितना भी सिखा दूँ ये, राइट, कितना भी सिखा दूँ, बिकॉज आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ, यू गाइस फॉलो। अंकित सर, आप मुझे भेजते हो ना ओल्ड मैन का वीडियो, वो क्या नाम है उसका? हाँ, इरा एप्सन का। राइट, यू फॉलो हिम, करेक्ट? आप सब लोग फॉलो करते हो। हाँ, वो ऑल एग्री उसके सारे बराबर एनालिसिस बराबर होते हैं, मेरे को तो बिल्कुल सही लगते हैं। राइट। मैं ऑप्शन के लिए नहीं बोलता, लेकिन ग्राफ बिल्कुल सही होते हैं उसके। Still you are not making money. What नहीं, might be the बिकॉज हम इम्पेशेंट ट्रेडर है। जैसे अगर उसने बोल दिया कि सेमीकंडक्टर से टॉप हो गया निकल जाओ, तो अब फिर भी हम उसको चेज करें जाए, गलत है। जैसे तूने एनवीडिया बोल दिया कि 170 पे निकल जाओ, तूने बोल दिया टारगेट 150 180 पे निकल जाओ। अगर एक बार में तूने बोल दिया या ईरा ने बोल दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया। हम ऐसा होता है कि स्पाई में कोई ट्रेंड बन ही नहीं रहा है, वो घुस रहे हैं उसमें। मेटा में अभी लास्ट 3 दिन से कोई ट्रेंड नहीं बन रहा था, घुस गए हम उसके अंदर। तो पैसा हम मोस्टली बनाते हैं स्टॉक में। लास्ट मेरे 1 साल से क्या हो रहा है, हम स्टॉक में पैसा बनाते हैं और ऑप्शन में गवा देते हैं। ट्रस्ट मी, दैट द रीजन वी आर लूजिंग मनी। मैंने अभी तक स्टॉक में $1 लाख बनाया होगा, लेकिन आई लूज $2 लाख इन ऑप्शंस। ठीक है, मेरे को अब ऑप्शन नहीं करना है। ठीक है, वो जय ने बिल्कुल सही बोला था, देख कि ऑप्शन में चस्का बहुत अच्छा लगता है कि बन गया तो बन गया, नहीं हो गया तो निकल जाएंगे। जैसे जय ऑल्सो told me that you are making a big mistake. Ultimately, you are losing money every day. So that is again, जब हम लोग ऑप्शंस का सेशन लेंगे ना पूरा, उसमें वो हम लोग तो पूरा डिस्कस करेंगे, उस टाइम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, करेक्ट, कि why you should not buy options। और अगर ऑप्शंस बाय करने हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो ऑप्शन बाय करके पैसा कमाता है ना, वो इतना पैसा कमाता है जो ऑप्शन सेलर पूरे साल में, 2 साल में, 10 साल में नहीं कमा पाएगा। इतना वो एक दिन में बना सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन बायर बनना है तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, very disciplined. Small mistake can take up your entire capital. I am the one. Guys, I am the one. I was thinking of making 100,000, but you cannot make that many moves. Storage बंद कर पहले, let's learn quickly. हाँ, तो विनायक मेरे को इन सबको ये बता कि बेसिकली अब जैसे कल सपोज कर स्पाई है, तो तू कल सवेरे का स्पाई का मूवमेंट कैसे ट्रैक करेगा कि उसको क्या ब्रेक करना होगा तो वो 400 जाएगा। करेक्ट। तो अभी हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, राइट। जैसे आप लोग अभी आपको कल का मूवमेंट चाहिए, राइट। कल का मूवमेंट में आपको डे वाली कैंडल पे नहीं दिखा सकता, राइट, क्योंकि एक दिन का मूवमेंट है पूरा। तो हम लोग अगर इसको नैरो डाउन करते हैं, अगर हम लोग जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो एक दिन का मूवमेंट, यू आर सेइंग इफ आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 1 month,
That is when I look at the 1 day thing and then make some Right. lines, I believe. You're going to teach me later on how to draw those lines and stuff. Right, right. These are mostly called as swing trading. Swing trading is something you hold a stock for a week or a month or 2 or 3, correct? Where your idea is not to exactly invest, but you're also not a day trader. You come somewhere in between, that you invest in a stock, right? You get some appreciation of like 5%, 6%, and you get out of the stock and you enter into the new stock. So that's how you trade, correct? So these type of traders mostly use day candle because they are looking for a bit broader time frame, correct? But if you are a trader who is like going into calls, puts, right? You have to look into the smaller time frames because you need to know that what exactly is happening in the smaller time frame, correct? Recent movements. So if you look at the 15 minutes thing, do you also need to zoom in, look at 1 or 2 days instead of looking at the entire, like when you are selecting the day, you are looking at least 3 or 4 months picture, right? Right. Now, when you are changing it to 15 minutes, do you need to maybe look only the past 1 week, not further back? So the way I particularly analyze the chart is first I analyze it on a day frame, right? I first analyze it on a broader term, that what exactly is the trend of the market in a bigger picture, right? I see. So let's suppose now I'll tell you the concept. इसको हम लोग बाद में No. Why do you do that? If you're trading on a day, on a, if you're a day trader, why do you look at the long picture? Why? That is what I need to understand. Exactly. So why I do that? Because it gives me clarity, total clarity that the stock or the type of thing that I am entering into, correct? As suppose अगर मेरे को डे ट्रेड में जाना है सेलिंग की तरफ, ठीक है? अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को सेल करना है, but how do I come to this conclusion that I want to sell? Because I see the broader picture. कि मेजॉरिटी अगर मैं मार्केट में देखूं तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, करेक्ट? अगर मैंने कल का देखा, कल का भी डाउन ट्रेंड था, पॉसिबल है कि आज वो फॉलो अप हो सकता है। तो मैं ये जो ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ, तो जैसे कि मैंने अंकित सर को भी लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको जब भी ट्रेड करना है, यू ट्रेड अ स्टोरी, करेक्ट? इसका उसका सुनने से अच्छा यू मेक अ स्टोरी फॉर योरसेल्फ कि ब्रॉडर टर्म पे देख रहा हूं मैं, ब्रॉडर टर्म पे मार्केट का पोजीशन मेरे को डाउन दिख रहा है, करेक्ट? कि मार्केट नीचे जा रहा है, करेक्ट? अभी मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को बाय की तरफ जाना है, व्हाई आई एम थिंकिंग यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि ब्रॉडर टर्म पे अगर मैं देखूं, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, करेक्ट? अभी जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन खींच दूंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहा हूँ इसको। ट्रेंड लाइन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन समझना। अंडरस्टैंड दिस। अभी मैंने क्या किया, राइट? मैंने बस क्या किया, यहाँ से एक लाइन पकड़ी, यहाँ तक डाल दी, राइट? सो दिस इज नॉट अ रैंडम लाइन कि मैंने कहीं से पकड़ ली और कहीं पे डाल दी, ठीक है? अगर आप ठीक से देखोगे, दीज आर द एग्जैक्ट रिजेक्टेड पॉइंट्स जहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया है प्राइस को। अनिरुद्ध समझ में आया? जेम्स, एवरीबॉडी गॉट इट? this is what I was explaining you. This is the most important part of the session. Yeah, खतरनाक है यार. It means बस मतलब चार्ट में कुछ मीनिंग नहीं था, अभी कुछ मीनिंग आ गया. हाँ, देखो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ट्रेंड लाइन समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बीच में घूमेगा स्पाई। मैं अभी आपको पर ये अभी जो ट्रेंड लाइन है, ये कौन सा, अभी हर वीकली का अलग ट्रेंड है? ये पूरे महीने का, एक साल का ट्रेंड लाइन बना रहा है वो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम पे पहले क्यों देखना चाहिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाने से पहले, ठीक है? मैं आपको अभी एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं स्टोरी ट्रेडिंग, करेक्ट? कि हम लोग हमारा एक स्टोरी बनाते हैं क्योंकि हम लोग वो साइड पे क्यों जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 50-50। अरे एक बोलो क्या? सॉरी, मैं तेरे को हिंदी में भी पूछ रहा, इंग्लिश में भी पूछ रहा, ऐसा डोंट टेक मी रॉन्ग, आई जस्ट डोंट नो व्हाट अदर्स आर कंफर्टेबल विद, तो इसलिए you know, don't get me wrong, that's okay, right? मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, चलेगा, right? All are comfortable, I think, except Anirudh. Okay. If you are not English able is to more preferable, but it's okay. I think let's do English also. So I think Anirudh is little bit less Yeah. So English is more preferable. Vinayak, follow the trend lines and the bottom trend line and the top trend line.
Okay, so English is comfortable for everybody, right? So Yeah, correct. I'll try to make the questions in English, right? Okay. Yeah. So the concept that we are trying to learn right now is the trend line. Actually, we are hurrying up the things because we need to understand the candlesticks first. But it's okay since we have the less time and you want to analyze the market well, correct? For the next week, so we are rushing up on the things. So basically, trend line is basically we draw a line from the rejecting points of the stock or the supporting points. It can be these lines as well. Okay. So what exactly is the trend line and what exactly its significance is, right? So it's not any random line that I have drawn here. If you see clearly, the points have been rejecting here, right? This is rejected. This is where the price rejected. This is where the price rejected. Now, why this particular thing happens in this manner only, correct? This is basically, you can call it in local language, it's a fight between bulls and bears. That every time bear pushes the market down, bulls try to push it up. Bears again dominates, push it down. Again it happens, bulls try to pick up the things. Again bear comes and they push it down. So basically, whenever they trade, they always trade in a pyramid. Okay. Whenever the big money comes in, it comes in the pyramid. They won't sell. See, if they have 1,000 rupees, they won't put all 1,000 rupees here. They'll start with 300, 400, right? They'll put $400 here. They will start here. Then again they'll come here. They'll push the markets down. When they see they are in a control, then again put the $400. When you say put the 400 down, you're saying Yeah. they will. When you say short, what is the kind of trade they're taking? Yeah, so shorting it doesn't matter if they're So shorting. they are selling, right? Right. So basically, what I'm They're trying to say. selling the. Yeah, tell me if you have any question. No, he's asking what exactly is that $1,000 he's trying to put. He's selling $1,000, like he has $1,000 stock. So he will be telling 200 here and 200 there and 200 here. Yeah. So basically, let's suppose you want to short the market, right? You are a big trader, you have big money, correct? But this money is people's money, correct? It's not your own money. You have collected it from somewhere because you're a hedge fund, right? So now you think market is overvalued here. And you think a lot of other institutions will come with you to trade and take the market on downside, correct? So if you have $1,000 to invest, you have $1,000, right? More sense to put $1,000 here at risk. No. What they do basically, first they put some 400, 300 and they try to gain the control over the market. They try to make the bulls weak, right? Because your bulls are here as well. Even you are saying they will buy puts. No, I'm trying to understand what are they really doing to bring the market down. Are they just selling the holdings they have, the huge holdings they have? That's one way to bring it down. Right. The other way is they buy puts, right? Usually what happens? See, whenever, as far as I know, I have seen the big institutions, they never buy. They cannot buy. Because that's what I feel. Because when it comes to option selling, right, it's the game all about 0-0 game, right? If somebody's earning, somebody's losing. It's a sum game. It's not like a stock that everybody's earning the money. Correct. If stock goes up, you earn the money, I earn the money, Ankit sir earns the money, everybody earns the money, right? When stock goes up. Because even though nobody's selling here, we all make money. Correct. But when it comes to options, somebody has to sell if I have to buy. And they only short. They always sell call, they always sell the puts. Because they know they can take the premium and they know in option buying, only way option buyer can make money is the momentum. If you do not get momentum, you will lose money. Even though you are right, option buyer 60% lose money. Even though you're right, I'm saying. If you're wrong, then you're 100% losing money. You're gone zero. But even if you're right, 60% of the times option buyer lose money. Because of the concept called theta decay. Theta decay.
And if Hmm. somebody is worth $1,000, which I'm considering here as a $1 trillion or $100 billion hedge fund is running, right? He Hmm. cannot take 60% of people's money. Correct? He will try to go somewhere where he has a ratio of 66% to win. He will sell options. He will sell the contracts. So these all are traded contracts. See why market price is falling. Either some big investor is selling, correct? Either some big investor is selling calls, correct? He's into the call. Buying puts won't make any effect on this. Buyers are very less in the market. They are here to lose their money. उनसे वो आप कितना भी put buy कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको. Because how much you will buy? How much you will buy? Correct? कितना risk ले सकते हो capital? But option selling, I can take a risk. My capital is $1,000, right? I can put all $1,000 here at risk because I know my winning percent is 66%. If your winning percent is 30%, will you put all $1,000 there? If you're doing, then you're doing some stupidity, right? You're like losing your $1,000 there, where exactly you know that I am going to lose this money. So you are saying buying puts or buying calls, it's only 30% success rate, whereas selling puts and selling calls is about 66%. Right, exactly. So when we'll have this session on the option, I'll decode this entirely. I'll tell you the exact process, how it happens, and then you'll understand it clearly that why exactly this percent ratio is there. What is the logic behind that? Correct? What I am trying to tell you, since your question was that why this and what exactly the people are doing. This can be people selling holdings, right? Holdings can be there. Let's suppose, as I said, swing traders. You may be the swing trader. You are here for 5-6%. You entered here, you can exit here. Correct? So at this stage, people are thinking that this is not worth buying here. It is overvalued. So what happens here? Supply is more because people are selling more and nobody is interested to buy at this price point. So that is the reason it goes down, because supply is that much and buyers are not able to hold. Hello, Vinayak. Hello. We lost his audio. Hello. Hello. Ankit, can you hear me? Yeah, I can hear you. We lost his audio. उसका audio cut हो गया क्या? Even the screen frozen. Blue screen हुआ शायद. इंडिया में इंटरनेट. अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना गाइस, जेम्स, ये देखिए ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है. तुमने नहीं सही बोला यार. क्या हुआ उसका? यार चले गया लगता है ऑडियो वीडियोस का. वापस देखते हैं आता है कि नहीं आता. उसका व्हाट्सएप में भी मैसेज डिलीवर नहीं है. इंडिया में इंटरनेट चला गया ऐसा लगा. तो तुमने एक चीज नोटिस की, वो जो ट्रेंड लाइन थी ना, वो ऊपर के रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन टच करी थी. अभी वो 2-3 दिन में जो है ना, ऊपर का ट्रेंड लाइन जो है ना 404 वहां तक टच करना बाकी रह गई थी. वैसे एक नीचे की ट्रेंड लाइन भी बनती है. That is when it will touch the trend line. Yeah, that's the reason I keep saying it will try to So touch if that it 404. goes further above 404, then we are kind of in a maybe there will be a shift in the trend, right? But ऐसा नहीं होता. अनिरुद्ध यही तो बोलना चाह रहा हूँ को कि ट्रेंड लाइन जब बनती है ना, उसमें वो एकदम से ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके नहीं जाता है. He's back, I think. हाँ बोल भाई. Am I audible now? Screen is visible? हाँ. Yeah. ठीक है, एक काम कर विनायक, 2 ट्रेंड लाइन बना. एक बार ऊपर की भी बना और नीचे की बना. दोनों को बता के दिखा. एक रेजिस्टेंस वाली और एक सपोर्ट वाली भी. Right. So the one which you have drawn is the resistance trend. Resistance trend. Correct. These are the resistance. अभी ये कोविड वाला सपोर्ट निकालेगा और उसके बाद देखेगा कि कहां तक बन सकती है. So basically, where the price point is actually rejecting now, we can have the trend line something like that. Okay, this can be one trend line.
right? If you go to on a bigger level, you can find, right, that price was rejecting at this level on the lower levels, correct? Since you see this is you are not seeing this on a bigger side because volumes are very low here, right? But this is one kind of trend line where actually the price was rejecting. But understand first, जब मैंने पहली बार आपको बताया, when I told you the first time, this was like line was like this only, right? Straight line, straight line. This is resistance, this is support. This is trend line. Trend lines are never straight, correct? If you see, trend lines are always tilted either towards the downward or the upward, correct? Why so? Because this is called as a standard support and resistance, correct? Support and resistance. That stock price moves like this. This. You must have seen this pattern in the stocks. Why this happens? Because nobody is interested to buy here, nobody is interested to buy, nobody is interested to buy, and nobody is thinking that it will go down, it will go down, it will go down. They are picking a bit from here. So it makes sense, right, to buy it here and sell it here. And why won't like why people do not earn money by this? It's so simple, right? We have to buy it here and sell it here. What is the logic? What else you have to do? You just have to know that if stock is coming here, purchase here and sell it here, right? Because it is happening. You have been like, if you see the chart, you see this happening every day, correct? Every time you open up the chart, starts like same. The reason because we fix our trading style by doing all the other things. I'll tell you, the messier the chart, messier your trading account will be. You will blow your capital like anything. You don't need hundreds of trading. You don't need that all the 100 Bollinger Bands and all this, because it is simple. It's not easy, but it is simple. The more you make it complicated, that will confuse you. And what exactly I need? Because you can see on MACD, it is saying buy. Bollinger Band says sell it, correct? Trend line says buy it. Support says sell it. So the way. But I have a question. So the trend line will change depending on what data you have. Let's say if you're looking at the data, maybe for a year, right? That trend line will change, correct? So let's say if you zoom this out and you leave the trend line, zoom out, will the data change, or will the data still remain this? Of course not. This is the magic of the trend line, because it is following the price. The price won't change, right? See, this 460 price at 1st March will not change. No matter if I go on 15-minute candle, no matter if I go on 10 minutes candle, right? Or a 1 week candle. But zoom out, like I'll show you. Can you zoom out? Yeah. So now you're making that trend line because you're touching the peak, right? Correct. Yeah. So that's what I'm saying. So you only make the trend line when you touch the peak, all the peaks, correct? Correct. So you cannot miss a single peak. Okay. So I think, yeah. So now my question now is, like, when you make a bottom trend line, where do you make the trend line for the bottom? Do you make it from the same point where you started on the peak, or where? So let's say, for example, if you were to draw the bottom resistance, okay, where will you start the resistance from? Make a bottom support. I agree now. I'll tell you. See, this is the top. I can make the trend line here as well. I'll tell you the logic behind the trend line, right? And when it breaks, you have a big movement, and when it rejects till the last swing. No, I think my question is still, let's say, for example, you made the top trend line, okay, which is your resistance, right? So all those top points are your resistance. Now, your buy zone, right? Where will you start your buy zone from for the trend line that you drew for resistance? Where's your buy zone for the data? Right. So if you see these trend lines, correct, these are supports. These are rejecting from downside. Right. But what I'm trying to say is that bottom line, you cannot have the bottom line similar to the top chart, correct or no? No, we can have it. Of course, we can have it. See, we don't know. So, see, if I draw the line here, so I'm not saying the market will not go above this, right? What I'm trying to tell you is price has been rejecting here.
Right, Right? right. No, that I got. Okay. So Yeah. Eka, Vinayak, his question is that right now you are making a trend line for this, Correct. correct? The blue line. So Mm-hmm. if you go on the right hand side, do you think that what is the point that it will touch this this blue line on this side, on this Correct. November one? ये point Correct. क्या बन सकता है? This is 404, 403, something like that. There, that's where we will get rejection of that 200-day moving average on right hand side. Yeah. Yeah. हाँ ये वाला. So basically, I guess the question was, just I have put in this line because it was on a higher side, correct? It rejected from the higher side. The question was, how can I identify the low? हाँ, lower Correct. side trend line बना एक. This lower support trend line बना, जो तूने अभी Right. Nasdaq की बनाई थी थोड़े दिन पहले. Right. So let's go. नहीं मतलब नहीं मेरा इसी के बना दे, इसी के बना दे, इसी के बना दे. Don't change the graph. Just make a trend line for the support trend line. जिसके बीच में in middle of that the stock is traveling. Right. For the last Now, whole year. Yes. Now I'll tell you why it happens, particular thing, right? Because this is in a downtrend, correct? I am drawing this line in a downtrend. When we see the uptrend, correct? When I see the uptrend, right? I've seen the price support here. Can you see this? Mm-hmm. Can you see the rejection points? And can you see that market is exactly coming up here and it is going up? Now the volumes are not that this huge, because why they are not huge? Because market has been already stretched. Correct. From here, if you see, from here, from the COVID, markets are already stretched 100%. So you cannot expect this kind of movements here. Correct. Because stock will not go up like this. If you are here, we cannot expect this to go this like this. Correct. Because it's already 100% up from the point. And why this particular thing did not happen here? Because in the COVID, things were very uncertain. Nobody knew what exactly to do. Right. When stock market came up, it came up in a straight line till here, 60%. There was no price action because this was totally driven by emotion. Correct. That when Driven stock by market what? emotion, like people started buying it because market was continuously going up, up and up. So more money put into the market, so market went up straight 60%. There was no price action here, no indicator. I'll tell you, no indicator in the world could have tell you that this 60% movement is coming up. No indicator. I can bet on that. No indicator can come and tell you that this 60% movement is coming, because this is a very unusual activity that happens in the market once in every 10 years. That market dips down like this, which has no reason. Like COVID has the reason, but it was not that everybody would sell this much. And then suddenly the buying starts, and more rigorously than that, right? It did not stop here. It went up here. This is called the overvaluation. So that's where this line parallel खींची है. यहाँ तक we can at least go there, but what is the percent going यहाँ तक ऊपर जाने का? That time SPY was like 300, correct? Correct. अब वो 300 से 450 चला गया. That is the overvaluation. Maybe 50 points is fine, but why 150 points? So that's the reason SPY is overvalued about 350. Correct. So I'll tell you what happens exactly if this movement, right? I'll try to explain it here. So your question was when I can identify the lower line, correct? The lower trend line. Whenever you see the price rejecting like this, okay, that there is a sudden movement, this kind of candle. Let's suppose if you see the candle like this, where you find the wick and the body on the upper side, correct? This type of candles are the strong rejection. If you see here, Doji type, correct? Doji type. These type of candles are the strong rejecting points, correct? But if you see the overall view, first I guess somebody asked me the question, why are you looking for the bigger time frame? Correct? Because bigger trend is a downtrend. If I see the market on the daily time frame, market is making lower lows. Correct? So if I have to buy, I'll not find this kind of trend line here to buy. Correct? I'll find this type of trend line where market will break this, will have the support, will have the retest, and it will go up. I'll find this because I don't want to get trapped in the lower lows, right? I don't want to go against the market for no reason unless and until I find the opportunity. Correct?
So if you are seeing the uptrend, I'll tell you this, and no trend line will be like 100% accurate, but I'll tell you the logic behind the trend line. So in this particular manner, if stock is traveling like this can be your lower trend line, right? When stock goes up, this can be your lower trend line, and when stock comes like this, something like this, then you can have this trend line on the upper level. Okay. What basically the logic of this trend line is, mostly stock either will take a support from here and it will go up, or if it breaks, then it will again come back to retest here and then it will start dropping. Same goes with this particular logic. If stock is in downtrend, right? What general perception is, if stock breaks this up, अभी breaks एग्जांपल this देखिए line, 40 सपोज कर ये जो सेम ट्रेंड लाइन बन रही है उसमें अगर ये हम्म, 403 या 404 ब्रेक करता है then it might go up, otherwise it will again go. What is the bottom then it will touch? अगर ये right? देख ये जो बन रहा है तेरे सामने अब ये हाँ 404 तक जा सकता है. प्रिडिक्शन इज दैट कि अगर ये 404 से अगर नई रिजेक्शन आता है तो ये वापस नीचे कितना जाएगा? हाँ, so see, it always try to break the last low. लास्ट लो ये यानी वाला 350, करेक्ट? दैट्स व्हाट 350. पीपल आर सेइंग. अब यहाँ एक Yes. नीचे ट्रेंड लाइन बना, एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी बना. So अगर मैं इसको एक जोन में मार्क करूं, ठीक है? I guess somebody asked me the question and this will clear the doubt. This is called a parallel line. Okay, the same line, and if I see that what kind of channel pattern the stock is in as of now, so most of the time stock was in this particular pattern, correct? Yes, Most yeah, probably it this will is, come here. yeah, that's, yeah, ये point क्या है? 340, correct? Yes. Yes, that's what everybody indicators are saying. It will देख अब ये top में क्या बोल रहा है? 410 या 407 बोल रहा होगा. यहाँ तक. हाँ, that depends. See how कितना like it depends. See how many days it take to go up. हाँ That मतलब particular लेकिन thing. it cannot go to again 420, correct? It cannot go to 430. No. See, if it goes up to here, if it breaks this channel, right? Understand there will be lot of buyers. There won't be sellers. There will be buyers who will be interested because they think that market was in this particular kind of movement for a very long time. Correct. If you see this movement, it is from the what is it 31st December. Now it's almost a year that market is trading in this. If it breaks, that it can go this level, right? Yeah, I agree. But do you think that with this recession, not at least nothing changed, this can break this trend line and go above 410? Right. So that is the question. If it breaks, see, it's all about the possibilities. Like let's suppose stock comes here, it breaks here, right? But it will not go in one go like this, correct? Because market will not let anybody make money that easily. That you are coming, you are entering, and you will start making money from day first. These movements are always there to trap the buyers or sellers who have the weak hands or the what we say don't have the patience to hold. Somebody has bought here. This move, right? This move was to scare him, to get him out of the market, right? If somebody is buying here, thinking this is the support, again it will go up. This move was to scare him out. If somebody was buying here, this move was to scare him out. But at the end, the market's nature is to be in this trend. Yeah, good. James, Anirudh, are you getting some what exactly? और कई क्वेश्चंस है तो पूछो कि कल का क्या करना है. ये चीज तो अपन को धीरे धीरे करके समझ में आएगी. हाँ. नाउ अब एक पॉइंट पे चलते हैं कि कल सपोज का लेट्स टेक अ एग्जांपल कि स्पाई को कल अभी पैटर्न तो साफ लग रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है. करेक्ट. स्पाई का पैटर्न देख के देखो लग रहा है ना. 348 से वी आर ट्राइंग टू टच 400. करेक्ट. 200 डे मूविंग एवरेज. Yes. अब क्या चांसेस है कल का ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इस वीक का ट्रेड कैसे ले सकते हैं? राइट. अभी सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ. देयर आर दो ट्रेंड्स है, राइट? देयर आर टू ट्रेंड्स. One, if you see the market's major trend is a downtrend, ठीक है? If you understand this clearly, it's downtrend, correct? Because market is making lower lows. Everybody is getting this point. But whenever market goes up to this level, just see how it goes. It makes in a shorter time frame, it makes higher highs.
No, it's making higher lows, right? Right. So you said lower lows. So लोअर लोज lower. बना रहा है ना, हायर लोज कहां से बना रहा है? Higher lows लॉन्गर है, टाइम ये फ्रेम, lower lows है. 1 ईयर Right, टाइम right. फ्रेम जेम्स, ये देख लोअर लोज बन रहा है ना ये. Lower इसको हम lows. लोग लोअर हाइज भी बोल सकते हैं, लोअर लोज भी बोल सकते हैं, लोअर क्योंकि हाइज, लोअर लोज लोज. लोज भी नीचे है, करेक्ट, इसके, और हाइज भी Mhm. नीचे है. Mhm. ये सीरियस, ये डायरेक्ट इंडिकेटर होता है कि दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड. ओके, यहाँ तक तो एवरीबॉडी इज विद मी दैट दिस इज डाउन ट्रेंड, करेक्ट. Yeah, yeah. Yeah. Okay, now again, if market is taking a support and again buyers are trying to push to the this levels, right, this level, so they have to make the higher highs here, correct, to go to that level. In a shorter time frame, if you see on a longer time frame, even if the market goes down, even it is making lower lows here as well. So if you see, the same pattern is here as well. Okay, and that is the reason I'm saying that it might go up to this level before rejecting. So very limited or less space is there in the SPY. We have to, and why I'm saying you should get out of the market when at a 405. The reason being, there are a lot of negative news in the market, correct? And that is the reason market will give one push. And if market has to come down, it always makes a candle like this. Whenever you see these type of candles in the market now. What candle? डोजी That टाइप big बताएगा, candle? ये देख, Yes. ये वाली डोजी बताएगा, ये वाली, ये ग्रीन है और ऊपर से हॉलो है. It can be red, What it is can be doji? green or anything. Look at this candle. These are the power candles. What We is learn doji? about candlesticks as well. डोजी ऐसी होती है कि कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर एक पतली सी डंडी होगी. ये देख लेफ्ट हैंड. Somewhat like this. See, this is the wick, right? This is called as a shooting star candle. When we learn about the candlestick pattern, that's what I exactly wanted to know, that if you guys are aware about this, because we are directly No, jumping into the trend line. I'm not aware of that candle. So गूगल Because that's करना. what exactly is happening. We directly jumped into the trend lines. Na? To understand this, we have to have the basic knowledge of the candlesticks as well, correct? We have to know the basic understandings of what exactly support, demand, and supply zone is. So everybody got what demand and supply zone is? So basically everything above that upper trend line is basically resistance, right? So that is the resistance, and everything below the lower trend line is where there is demand, right? Correct. Correct. So demand, I understood. What is supply? Right. So basically, this is supply. This is supply. This is supply zone. And this is demand zone, where people are demanding this. See, people are demanding SPY at 350, correct? They want the SPY to be get into their baskets into 350s, zone of 350s, correct? And they want to sell somewhere around this. What this shows is sellers are in control. See, buyers are firm here. They are not letting the price down by 350. It is not making this kind of trend line, correct? It is making this kind of line. Support is flat, but the trend line is coming down. That means price is getting squeezed here between buyers and sellers. Buyers are not letting sellers push this price below this, right? But sellers are not even letting buyers go above the previous high. So what it indicates is price is being squeezed here between these lines, correct? So either, see, possibility is always 50-50, correct? Either buyers are gonna win or sellers gonna. Either sellers have to give up or buyers have to give up. Otherwise, market is not moving anywhere. It will just be here only doing some time pass like this, correct? But looking at this, since it's already in the major trend is downtrend, shouldn't we just enter into longer puts, and then ultimately we are going to hit that 360, which is when our puts might, make good money, right? Right. Agreed. Timing hota hai. That's the reason. So exactly. So the first question, right? You guys asked me that why I'm exactly looking at on the higher time frame and then going to the lower, because even if I want to sell the market, I want to find the perfect point. Right? If you buy puts here, I tell you, if you buy puts here, right, that your target is still here, that market will go down here, correct? Agreed? The point is the market will go down here.
But if tomorrow, because stock goes here, your puts will be zero. Even though agar wo like day after tomorrow or after next week it goes here, it's not going to benefit you. Even though your view was right, that market is going down, but your timing was wrong. So get that timing, what we do is we particularly see that market is in a downtrend on a daily chart, right? So what is trying to do? Market is trying to go again up to this level. What I can see here is, see, market is going came here, it touched down here, went here, it started again, went here. Now market is trying to go up here, correct? So right, if I want to sell, I will sell here. I will not sell here. Even though even if market goes here from tomorrow, but I don't have the confirmation, right? I don't want to lose the money. This way, if market is here, if I'm selling here, if market goes up, correct, even a little bit, I have a time to fix myself. I have a time to save my capital. From if I sell the let's suppose if I buy puts here and market goes here, I'll make huge loss. Correct. My stop loss is very big. But if I short the market from here, exactly till this point, I get the confirmation like this. When I get the candle like this, correct. When I get the candle like this, when I get the candle like Can this. you show me that candle? What is that candle? How do we find that? Okay, this is the doji candle. So on the next session, I guess we'll talk about the candles as well, because these are very important when you're actually learning things on the chart, right? Candles are the most important thing. So you need to know the what kind of patterns are there in the candle, what kind of candles are there. There are different kind of candles, and there are different ways to trade on that particular candle. I particularly feel most of the time we put a lot of indicators and other things. We don't need that. Simpler your chart is, simpler your what we say analysis will be. There will be not a lot of mess. One trend line, one support line is enough for you to trade, to find where exactly you need to enter. Correct. Now see markets. What are markets doing on a broader term? If you see here, market is trying to create the higher highs. Right. Correct. So if it goes like this, then I have a good opportunity to short the markets here. And my market should go up until up to this point, because see, price has been rejected here, and it will get rejected here. Because buyers are getting now more dominant, right? They are pushing the markets up. And what sellers are doing, right? They are trying to compress the market down. Correct. So this something like this patterns happen, right? Stock is like this, 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 this. So it is not like a very random what we see. That straight line. Correct. उसको बोलते हैं कि bullish pendant or bearish pendant, correct? Correct. So most of the times what happens when it squeezes down till like here, one has to win. And this movement is always very fast, either on the both sides. Because if buyers are here, their stop losses are here. Stop losses as in, if I am buying the stock for 350, or let's suppose my contract is of 350, correct? If market goes to 320, I cannot bear any more loss, and I want to get out of the market. That's the view, correct? But similar, a lot of people are thinking that at 320, I will get out of the market. So large number of orders get hit at one time, and that is the reason whenever breakout or breakdown happens, stock goes like this or this. The movement is there because these sellers give up. If it is on the upper side now, they are not going to hold, because see, their average is somewhere here. Their average is not here. They have not sold it here. Their average will somewhere come out here, because they have been selling here, selling here, selling here, selling here. Correct. They are making good money, right? So if they won't wait for stock to retrace 50% from here, right? As soon as stock try to, they will give up once they get to know, no, the buyers are more stronger, right? They're apparently trying to break this line, and they will dominate us. These guys will start rolling up, right? Round up their calls, because they have sold the calls, right? They will cover up their position. They will book profits here. Once they book up the profit, and these guys take in the put. So what exactly is happening? Once they are selling the calls, right? When they will buy that call back, and there will be puts as well, right? People will be selling puts as well. When this particular trend line goes up, people will be buying calls as well. So heavy call buying or put selling movement happens here, and then there is a big candle.
correct? Because this has been happening for a very long time, that sellers are trying to push the market down, buyers are trying to take the market up, and any one of them who is on the weaker side, correct? Anyone, be it a buyer or seller, they will roll up their positions very quickly and quick movement will happen. That is the reason when we take the trade on the breakout, that is the time when you take the option buying, correct? Because this will give you the movement. And once you are in the movement, and if you are right, you will make money. Got it? But in this type of movement, you should always prefer option selling, because this stock will not do anything. It will just do time pass. In this particular let's take example of Friday. SPY that the time pass and the hedge funds has gained the premium. Correct. So whenever market is not trending, what is the trending market? Trending market looks something like this. Sideways market is like this. Sideways market is like this. Trending can be this. Trending can be this. Trending can be this. Sideways is this. So right now it's more like a sideways. Because there is no much movement left, man. Right now, I think after 1 week or 2 weeks, it will be downtrend. Correct, Vinayak? Yeah, see, if you see here, look at this movement. This movement happened, right? 15% movement happened. Correct. So it's a big move for a SPY. Correct. 15%. If you stuck in this movement, now look at this. If you particularly see this level, if you buy it from here, correct, thinking that it will go up, you made zero money in all this time. You wasted 2 months. You think option buying would have made you any money here? Even if you would have sold the puts, or like if you have bought the puts, no, zero money. Because stock is what we say, roaming there only. So whenever the big move comes, then you should enter into the puts or calls in an option buying side. And vice versa, when there is no movement, you should always prefer option selling, because in option selling you will win in two ways. If stock stays sideways, you will have the premium theta benefit. If stock goes your way, also you will have the money. If stock goes even against you, right, if it comes back, you will still be in a profit. Makes sense. That is the reason big money like hedge funds, they always try to sell the options. They don't buy. I think now I started seeing that कि वो जो विनायक जो मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना, उसमें क्या करते हैं वो, जैसे अमेज़न ने 107 के कॉल्स लिए ना, वो 107 के उन्होंने सेल कॉल्स किए या सेल पुट्स किए, तो उसमें जब से उन्होंने वो लिया ना, उससे उस दिन से अमेज़न नीचे जा रहा है. फिर वो लास्ट मोमेंट पे शायद तक कवर कर लेंगे 107 के, करेक्ट. तो उन्होंने अगर 450 के डाला है 107 पे, तो शायद तक उस दिन से वो 92 हो गया है. तो दैट मींस दैट वो 450 के दे अर्नड इट आफ्टर दे इन द एंड ऑफ द डे दे माइट हैव कवर्ड इट आफ्टर एंड ऑफ द वीक. करेक्ट. नाउ आई एम स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि वो जो 450 के और ये सब जो डालते हैं, वो शायद तक इसलिए डालते हैं कि वो एट द एंड कवर कर ले. राइट. अभी मैं आपको सिंपल पॉइंट पे वापस समझाता हूँ, राइट. व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज, दीस टू आर डिफरेंट. ओके, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आर डिफरेंट. ओके, so again, support and resistance basically, if you really want to know what exactly is the resistance, wherever you feel price is rejected, just mark the lines here. Yes, that's the resistance. That's it. Exactly. एक काम करते हैं, everybody knows about the meta stock. एक किसी स्टॉक को पकड़ ले जिससे कि रेजिस्टेंस और उसका सपोर्ट समझाएगा ना, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा. Okay, you guys tell me what stock you want. मेटा में सबको सबके पॉइंट्स याद है. Yeah, पहले SPY तो पढ़ ले यार. Let's study SPY first, then we can go into individual stocks. SPY में क्या प्रॉब्लम क्या है कि SPY के जो पॉइंट मूवमेंट्स है ना, बहुत स्लो है, बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको शायद तक समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. पर मेटा यार, actually मेटा, that's fine. I think anything, not meta, anything, any stock that has some movement. SPY में क्या जेम्स पॉइंट्स में मूवमेंट होता है, 0.1, 0.2, 0.3, तो उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर विनायक समझा देता है SPY में तो भी बहुत अच्छा है. मतलब I mean, let him see which one is better. I would go with SPY, but it's up to him whatever he. Okay, let's finish the SPY first, right? Now I guess James, right? क्या? James asked about the SPY, right?
SPY only. Yeah. So James, you got this point, right? 478 is the price where it got rejected, correct? You got Yeah. it as a resistance. So like, And do now- you just, oh, okay, so you're just, okay, approximating, right? Ki No, when you draw the line, are you approximating 478.97, or no. do you zoom in and then you draw the line? You got the point here. Basically, what resistance is, I particularly do not draw the line. I draw this kind of box, I tell you, because it's not like the exact point, right? Stock market do not behave like what we say exact draw point key. It will go down from here only, right? If Okay. you see this kind of demand zones, right? You see the prices here. Every time price is trying to reject from this level. You see No, that? but how do people predict like the exact point, like 196.07 पे आके reject हुआ है? Like how do they get that? Because now we already have the chart. So you are asking. No, when I can- know. That's what I'm saying. So when you put that, did you put it exactly at that point, or are you Yes, I put it approximating? exactly at that point. See, approximate what I feel is, see, this is the line. I feel this is the zone, right? Where price I is see. getting rejected because I can Okay. clearly see it. I can clearly see it because price fell down. Correct. I can see it. So this is the rejection point for me. Correct. No, Because that's price- fine. Yeah, I see that. Yeah, I got it. But I just wanted to know, like, how people know the exact point, like, Exact you know, point is point to there. See, if you 379. You zoom, can if you see zoom that. in, if you zoom in, You can right? see. If you zoom in, 479. high, mark the high. This candle's high. Okay, got it. Okay, mark this candle's high. If you zoom in, mark this candle's high, and you got your resistance. Resistance. Okay. See, if there are 4 candles like this, I'll tell you simply. If there are 4 candles like this, 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle, 6 candle, and then price started rejecting from here. Okay, you mark the high of this candle. This becomes your resistance. Yeah, that is Got it. This is the Got it. best example. Got it. Okay. Got it. Yep. Yeah. So what happens here is, and support and resistance, you got it right. This is the resistance level where market is rejecting the price, and this is the level where market's demand prices. And why it is Okay. so? It's not just now. So the Got bigger demand zone is, so better the what we say prediction will be, because from 1 year it has been there, correct? From 1 year, people are not letting this price down below, letting this price below 360 or 350, right? They're again purchasing it from here. From this level Got they it. have purchased, from this level they have purchased, this level they have purchased, correct? Because people have bought here, correct? It Got can it. be anything. It can be stocks, it can be contracts, it can be anything. But they are in a bull position from here. So they don't want their position in a danger. They don't want this stock to come down below this because they feel this is the fair value now. They feel this is a fair Got value. it. And Got it. what bears think that this is overvalued. They think this is ridiculous. So I cannot trade at 480. So they get aggressive here. And even buyers know that this price is overvalued. So they are not interested to buy here. So eventually supply in the market gets up, right? Because sellers are selling, correct? So supply, they increase the supply, and buyers are not interested in matching that supply to take that. So demand goes down because there is no demand from the buyers to acquire the stocks that they have sold, correct? So supply zone creates, and that makes market to go down. And then the downturn starts in the market. Got it? Got it. Got it. Yeah. Yeah. So simply, when it comes here, it's same like you have bought what we say 150 rupees thing from a store, okay, and suddenly there is a news that just that price went up to 250, but somehow you thought that actual my target is 500. Okay, understand? Is this people's target, or let's suppose 500 on the SPY, and somehow it got rejected, or let's suppose the target is 1000. They are sitting here for 1000 rupees from this point, correct? So what exactly happens when it comes down here again? That makes more sense to buy more because you know this particular thing is good and I am not getting this thing for any cheaper than this. So if I put my money here, 100 rupees, and somehow I saved 50 more, I'll put 50 more here. Correct, because it is again at my buying price because I don't want it to buy it here. See, let's suppose you wanted to buy this stock for 5 lakhs, or let's suppose $100,000, right? But somehow you could arrange only 30 at this level,
correct? You bought the stock for 30, but you always have regret because stock went up here. But you know the stock particular SPY is worth more than this, double than this, and suddenly the price drops and it comes down here. What will you do? You'll put more 70K here, right? Because you know you wanted to do that here. You wanted to put your 100K here, but somehow you could manage only 30. But now you have that remaining 70, and you got the price point exactly where you wanted. Yeah, I know that I understood that concept. Yeah. So what exactly will happen here? That everybody will start putting the money here, correct? At this level, this will push the market up again. And this is the resistance level, right? If you see, this is the where price got rejected from this level, correct? This is the level. I'm drawing this very fast because I have been doing this for like 3-4 years now, right? But to understand that, it's very simple. Wherever you see price getting rejected, correct? You mark that line. That is your resistance. Unless and until stock do not cross that thing above again, that stock is still in a bear mode. अभी अब इसके नीचे वाली एक और बना, Right? 430 के नीचे में क्या? Yeah, but again, this cannot be this cannot be a resistance zone, correct? Now this is not a resistance zone. Even this is not a resistance zone. Why? Because stock has not fallen. If it comes down here, right, and if it makes the lower low, if it breaks this particular line, then this becomes a resistance for me. Oh, नहीं ये फंडा समझ में नहीं आया. Sorry, I did not understand that. So why will you not put a resistance at 400? Why you're not going to put that? Rejection नहीं आया वहां से. Yeah. क्या नहीं आया? We didn't get rejection from that. See, 480 we got rejection, we went down. 460 we got rejection, we went down. 431 पे rejection आया, हम लोग नीचे गए, right? हाँ. Then right now we are not getting any rejection at this point. Past में देख, after that we don't have anything. Oh, तो हम लोग rejection तब आएगा. नहीं, हम लोग 481.75 से हम लोग 460 तक गए, right? 481.75 से हम लोग 460 गए. 460 से हम लोग 431 पे गए. 431 से हम लोग 396 पे गए, right? तो क्यों नहीं आएगा? नहीं, लेकिन No. Watch the lower lows. You should watch the lows. See, every Yeah, time so the there low is is a only rejection, 360 to 82, right? So Okay. lower lows बोले तो the first dip went all the way down to 414, right? Okay. And then the second dip went even further below 414 to some 396. Correct. Right? So each dip is breaking the previous dips. And that is when you say, okay, now this is, their tops are the rejection points. Exactly. So what will I do? What will I do right now? Okay. I will first put this line because as this is the resistance, correct? This is the strong point from market has rejected, correct? Now I see this point here, right? Market has come up here, gone down here, correct? Market has come up here, gone here. So when will I draw this particular thing? When will I think that this particular point, correct, is resistance? When will I think about that? When market will break this line. My last low. This is called as a swing, right? First swing. Whenever it breaks the swing, for me, this is now confirmed that this is my resistance. Correct? Again, the same thing happened. Market came down here, right? I'm putting it on the very bigger picture. It's not for a small time frame, but again, if you go to small time frame, logic is same. Okay? Market price came down till here, correct? Again, it went up here. When price again break particularly this level or this my particular swing, correct? Because I don't consider this because this is a gap. You can probably you're going to probably also put that smaller bump as well. Correct. Right, exactly. because that smaller bump also made a lower low. Right. Which means this one, right? That one, yeah. Yeah. So, on a bigger level, what we are considering here is to understand what exactly is. If you go here, logic is still the same. Logic is still same. That this becomes my resistance, right? Now, what becomes my resistance? Again, this high was there. The stock came down all the way, and it broke this line as well, right? 370 line. So now this becomes my resistance. So when now any
anybody can tell me when this particular point can become my resistance? When it next goes down below 350-ish, right? Exactly. That is when you will mark that top as the resistance, right? Resistance, correct? Why is so? Why is so? Because people are what we say, hedge funds are selling right there, correct? Unless and Sorry, until only when it makes a bottom you can call it a top. Is that what it is? yes. So you Yeah, could that's only good. call 479.77 as the top when it made a bottom of 4 something. Yeah. So basically, if you understand it in this particular manner, right? It's a downtrend. Okay. So I can see these are my clear points, correct? The resistance points, correct? Yeah. But these will be considered resistance only if this breaks this point. Once this breaks this point, I'll consider this as my resistance. Because something can happen like this, correct? It can go up from here like this as well, correct? There is no guarantee the stock Then will there come. is no trend basically. In the previous chart, there is no trend, right? So there's no point in even marking them. But in this chart, so the funda here is it's making lower lows and lower highs. So there is a trend. If one time it does lower lows, lower highs, and then higher highs, higher lows, then there's no trend. There's no charting, right? Got So it. Okay. yeah. I see. So, I see. So we are going by the trend, right? And the trend right now is lower lows and lower highs. And then now you can make those resistance points at the tops and the yes. bottoms. Oh, I Bottoms are the see. support. What are my Oh, okay. supports? So let's say if within the next week the SPY goes to 340, then we can say 496.03 is the Was the support? Was the support? Correct. 396.03, yeah, is the resistance point again. Yeah. 403. Yeah, so sort of this particular thing where it got rejected from, right? Because and mostly we do not consider these gaps, right? Gap down, gap up. We don't consider. Oh, where is sorry? It got rejected from 402. Okay, 402.07. Right. Again, now I like just understand this concept very well, right? I draw the support here as well, right? It was a 1 year support, correct? The stock price was continuously rejecting from this level, right? This particular line, correct? Around 350, 360, correct? These lines. Mm-hmm. If you understood one thing, whatever is the major resistance for any stock, once it breaks, correct? Let's suppose this stock here comes down to this, correct? Onto this. If this goes here, right? And if it starts making a new high, right? It breaks. The trend is broken. No, it can be broken. Of course. Why? It can be, of course. The see, what I'm trying to make you understand here is unless and until this thing is not broken, this is not our resistance. Sure. Okay, that's what I'm Yeah, trying makes to understand. sense. Yeah. So whenever this point breaks, Mm-hmm. okay, let's see. Let's mark this again. Okay, this line. We have marked this line, correct? No, I think Yeah. I got it. I don't know. Anirudh, you got it too, right? Yeah. I think we got it. Yeah, let's go to the एक next. काम कर सकते हैं, एक नया सेशन चालू कर सकते हैं विनायक का, मेरी वाइफ का अकाउंट है ये। विनायक नया टीम्स ग्रुप चालू कर देगा। Okay, I see this. एक जूम खत्म कर देंगे भाई. It's already like yeah, 1.5 hours. Let's do that tomorrow then. So Vinayak bhai, so tell us few tips before we log off. यार अभी I just want to know कि कल SPY क्या करेगा. I just want to know कि tomorrow, like what is SPY going to do? Whether it's going to go down or whether it's going to go up. Okay, so I'll share what my. I mean, I'm just trying to take it as an example कि how do we analyze to know कि trend क्या होगा कल का. Like you know, like कल का trend देख के how can we predict कि next day what is going to happen? Correct. On a broader term, I feel there is a one more room above 400, right, for a stock to go. If it happens tomorrow, I don't know. Let's suppose if I go on a smaller time frame, correct? If I see. Oh, so this is you did 15 minutes or 3 minutes? 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes on a daily, right?
Okay. Yes, but particularly in an Indian market, I am a day trader. I trade on 1 minute candle where volatility is extreme. Okay, because I follow 1 minute candle. On that, I follow where stock go up and down because for me, I want to know what exactly is going to happen in the next 15 minutes because my trade will last only till next 15 or 30 minutes, right? For that, I have to go to the super candles. So I trade on 1 minute candle, correct? Okay. Yeah. So basically, I'll tell you the points, correct? I'll tell you the points of the market. See, this point 398 is the last resistance, correct? That's where the price rejected from 398. If stock sustains above 398 tomorrow, or it opens up against here somewhere around 398, 399 SPY opens, or let's suppose it opens gap up. If it happens gap up, if it comes down a little bit, because every time gap up happens, some profit booking comes, right? Let's suppose you somebody has bought some calls here, he will book his profit here, right? Because he's having good profit because market has opened gap up. So if market takes the support from exactly this level, 398, right? High chances are there that market will break the next high at 403. Right? In order to go 403, we have to break for 398.10. 398, right? And it's more better if market opens 398 and it goes like it opens on a downside and it goes above 398, again come back, takes the support on 398, then this trade will be highly confirmed. This is highly confirmed because see, the reason this trade will be confirmed is, let's suppose suppose it opens somewhere here 394 or 393, correct? Then what will happen in the market? Basically, these particular people, right? Some people must have bought, right? They will get out from here, correct? Because they are seeing the loss, correct? Sellers will get out because they will book the profits, correct? Because they are seeing some good profits here, correct? This will push the market up, right? Then this kind of movement if happens, and this, if market does not respect this particular resistance, if it breaks this particular resistance, right, and then again it comes down and takes the support, like in a normal language, अगर market यहाँ से ऊपर चले जाता है, नीचे वापस ये जगह पे से अगर वापस रिजेक्ट मार के ऊपर इसके ऊपर एक बार चले जाता है, करेक्ट, ये पॉइंट से जहाँ से वो वापस आया है, तो देयर आर हाई चांस कि वो कल का जो हाई है वो तोड़ देगा, right? 403. This was a yesterday's high, correct? Last week. So it can break this high. And when it breaks, तो यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके गए होंगे, even they will get out of the market, right? When they go out of the market, there can be a much possible movement, and then again stock will start retracing back from here till this point, maybe till the point which is making like here. अगर ऐसा स्टॉक जाता है तो यहाँ पे कहीं पे जाके वो रुकेगा वापस. तो इसका समरी में बता, समरी कैसे बोल सकते हैं कि अगर कल बेसिकली ट्रेड करना है तुम्हारे को, अगर स्टॉक 398 के ऊपर रहता है और थोड़ा सा पैटर्न बनाता है तो इट विल 390. देखो 398 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल देखो, ठीक है? मैं आई गेस पहले से लाइन उधर है अपना. 398 के ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल देखो, ठीक है? यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, any candle below this, like this, if it goes above this candle, correct, थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आके इस लाइन से आपको कोई भी कैंडल ऊपर हुआ जाता हुआ मिले जो इसको क्रॉस करे, you can take a trade which will go up to here, this point, ये वाला point. 403 तक. See, if market के दो conditions है, right? If market opens gap up, gap down, वो कोई नहीं बता सकता आपको, वो टोटली न्यूज़ पे रहता है, राइट? Nobody knows where exactly market is gap up or gap down. I'll tell you, nobody can, apart from those who have the insiders, what is the information now, nobody can tell you the exact movement of the market, right? That कहाँ वो open तो करेगा. फ्यूचर के ऊपर से नहीं खुलता क्या मार्केट? जैसा अभी फ्यूचर अभी लो चल रहा है, राइट? So can we predict that the market's going to open lower tomorrow, or like so SPY is going to go maybe 390 or? Right. Probably right. if it's just before the market and if it's still low, then usually that is how it works, right? Right. So basically, those are the indications, right, that market may open a bit down or a bit up, because but any news can come up, right? So I cannot predict that market will open here, because anything can happen in between, right?
Right. before opening, right? What is in our hands, where market open and how we should trade it. Correct? On this particular thing, let's suppose the market opens the gap up here. Let's suppose market opens somewhere around here, 399. Correct? Then there are high chances that my market will retrace something on 398 or 397, and again it will start making its bigger move. And why this dip comes in the market is because if somebody has bought call option or somebody has sold the put option, and that particular person is a short-term trader like you guys, correct? You basically, if you are seeing this much profit, you will sell, correct? Because there is no point in holding. If you're getting good points, you're holding something overnight, correct? I have holding something here. If I got the down, let's suppose market open gap down, correct? अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर लिया, तो मुझे टर्मिनल में मुझे प्रॉफिट दिख रहा होगा, राइट? आई विल बी इन प्रॉफिट, सो आई विल गेट आउट फ्रॉम हियर. तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट हैपेंस, अगर यहाँ पे जब भी मार्केट में ऐसा कोई पॉइंट मिलता है और कोई न्यूज नहीं होता है मार्केट में, राइट? इट्स अ न्यूट्रल मार्केट. न्यूट्रल मार्केट में व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस हैपेंस, पीपल यूजुअली बुक देयर प्रॉफिट. तो उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, राइट? टिल दिस सपोर्ट स्टॉक कैन कम डाउन और थोड़ा और नीचे आ सकता है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कितना है सेलिंग का, राइट? आफ्टर दैट अगेन व्हेनेवर इट क्रॉसेस द डे हाई, स्टॉक मोस्टली स्टेज इन अ अप ट्रेंड. मोस्टली स्टॉक स्टेज इन अ अप ट्रेंड. लेट्स सपोज अभी जैसे कि यहाँ का जो डाउन ट्रेंड है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मोस्टली व्हेन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट हैपेंस, स्टॉक मोस्टली स्टेज देयर ओनली डाउन ट्रेंड, एंड व्हेनेवर इट चेंजेस द ट्रेंड, राइट? जब भी लास्ट वीक का लो और हाई तोड़ के ऊपर जाता है, इट मोस्टली स्टेज इन अपर साइड ओनली, करेक्ट? Okay. So even watching those candles for about 10-15 minutes, you will really know if it is continuing to go down, then it will continue to go down, I guess. Like the example which you told me before, right? How many candles would you see to say, okay, it is going down, it will further go down? First 15 minutes are mostly decidable for the market, right? What happens in the most 15 minutes, if you see here, right? First 3 candles that decide that what is exactly the trend of the market is going to be, right? On that particular 3 or 4 candles. Okay. Right. 3 or 4 candles. Because if there is a strength in those 3 or 4 candles, right, Ankit sir, we traded that yesterday. They should be big or fat. No, it should be big. So see, if market wants to go to this level now, 402, 403, right? There needs to be push, which is for the and that can be seen with the bigger candles. What I mean by bigger candles like this, red candle, okay, this candle, green candle like this, not these small ones. These are the sellers market, option sellers market, and this is option buyers market. That's the sellers market, wo chota wala. Yes, this price range, sellers make money, this buyers make money. And overall, if somebody is holding, and if somebody is holding till the day end, seller is making money because stock is sideways. But if you are somebody who is a scalper taking quick trades, correct, in the market, if you bought it here, sold it here, you make money. But if you bought it here, kept it till day end, you will be losing money since you bought the option. Okay, guys, let's do one thing. I have to close this account at this point. Let's set up one more day session tomorrow. Vinayak, can you help for tomorrow's trade so that we can have make money, something? Can you at least focus on SPY and NASDAQ for tomorrow? Is it the right to take calls or just might take sideways just for tomorrow? Because ultimately within this week, SPY has to touch 404. So that will be happening tomorrow or Tuesday or Wednesday. If there is a FOMC meeting on Wednesday, definitely the market will make a sideways tomorrow. So the action will be Tuesday or Wednesday if there is a news. So see if the graph tomorrow morning, if you can help any of the trade tomorrow, that will be really good. Otherwise, we will do one thing. If you are holding any stocks now, anybody, if you're holding anybody call option or something like that, send it to me, right? And try to analyze, and I'll give what my opinion is on that. ठीक है, अभी ज्यादा किसी के पास मोस्टली जेम्स के पास तो ज्यादा कुछ नहीं है. आई थिंक अमेज़न के पास विनायक नहीं, मेरे पास स्पाई के 1-2 कॉल है बस, दैट्स इट. ठीक है, वो तेरे पास कब के है? फ्राइडे के हैं?
23rd तक के, मतलब एटलीस्ट 3-4 दिन का टाइम है या मंडे एक्सपायरी? नहीं, मंडे एक्सपायर हो रहा है 2 कॉल। 405 कितना तक के लिए? 396? 387 के लिए मैंने इन द मनी। इन द मनी अरे लिया। बढ़िया बढ़िया, इन द मनी है तो बढ़िया। माइक्रोसॉफ्ट के पास है, इसके अनिरुद्ध के माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के है इस नेक्स्ट फ्राइडे के नहीं, एक्सपायरी। अमेजोन पे है, थोड़ा 110 का है मेरा अमेजोन ये फ्राइडे का। अगर इन द मनी भी है साला, तो $1-2 भी अगर नीचे खुलता है SPY, आई लूज मनी, राइट? Yes, you will lose money, but you will not lose the entire capital. Right. Then see, it will open up somewhere here, 390, 94 or 93. Okay, you have taken somewhere here, so there is a Right. still possibility, right, that this can go up, and your cost will turn into the profit, right? If market Right. starts going up, I you mean, will yeah, be in that a is what profit in a the game is. very Yeah, I'm expecting there'll be some movement this, week. So I'm thinking one day expiration calls, even if it's in the money, I will close my calls, not take any risk if there is an upward movement. So I was expecting there might be some upward movement Monday, but it doesn't seem like, at least the future doesn't seem like there वो is. ऐसे ही होता है, नहीं यही चीज कंफ्यूजन जेम्स। whenever you see a future goes down, that means market is opening up, gap down and will go up. देखो मैं एक और चीज पैटर्न समझाता हूँ। whenever you see a future down, that means the SPY will open at the lower bottom, like on the lower side, and then try to touch the higher side. Yeah, मैंने Using- देखा है यार Ankit. हाँ, Yeah, I've seen that actually, yeah, so but ये I've also पैटर्न seen होता the है। other way around हाँ, also. ये So I कभी don't know. देख बेसिकली दोनों साइड हो सकती है, लेकिन अगर 394 टच करता है तो चांसेस आर दैट इट विल क्लोज एट 399 और 400. बट इफ इट्स ओपनिंग एट हायर साइड 409 309 399, then it might close तो at lower bottom side. touch करेगा. हाँ, but chances are that it will touch both the sides. at the Okay, end. Vinayak bhai, I think Yeah. you give us Amazon. If you can give me, let's say 100 का calls ले सकते हैं क्या कल? ये हमें देख एक और और चीज मैं बोलता even हूँ कि विनायक देख ये he never says to go that far money. Anirudh, his strategy is totally no. different than your strategy. He never suggests go that far money. He always say in the money call. So stock is a 92. Makes sense. He will say it's only 92. He never asks you to go 100 calls. I think Yeah, it that's is- too much, right? That's like almost Yeah. like you're saying Amazon is going to make millions of dollars or something. No, see what I'm looking forward is that suppose if you take even 100 ka call, right? Since we're talking options, if you're taking 100 ka call, right? This can make you a millionaire in one day if stock goes like this. But 99% of the time you will be losing your entire capital. It will go to Makes zero sense. because you are not Yeah. selling. I see as a human psychology, I did the same mistakes. Even if it goes here 95, you think I profit again. Till the next month it will go zero and you will not sell it. So idea here is to first of all preserve the capital. It's not to grow the capital. First you have to learn how to preserve my capital. How can I preserve my capital? If I have 100K, how I am not able to give out more than a 2% of the in a day, right? So if I have 100K, I am putting 100K on this, that too in a bet which I have a 10% chance of winning. And then if my stock goes down, if 100K becomes 10K, then it's not stock market's fault, fault or any Amazon's fault or hedge fund's fault, right? It's your fault because you knew this calculation that I have 100K, I am betting on something where I could lose my entire capital, but there is a chance of 10% winning, right? So you have taken this chance out of your adventurous nature or greed, something like that. But actually, the way we do not fear the losses in the market, we fear the profits. This is how the human psychology works. You will never sit in the profits, you will get out. If you see a $2 profit in your account, you will go down. You will totally cut it. But you can sit with a $20,000 loss easily. You will sleep that I will not look into the system only. Someday it will go up, and it never does. It is going zero. Stock has come down this much. You are hoping that this will go this much, but you are not saving your money, which you could save this much at least. So the idea here is option buying. You're already 33% of chances to win, right? Even though if you go out of the money, your chances are 10%. 10%. Now for that 10%,
it depends on you how much money you want to put on risk to get to that 10%. If you're 100K and if you're putting 100K for that 10%, that's not a smart move, right? Sure. Already if you're 33% and you want to buy the option, you are certain that things will go right. Like if I know this moment, right? Amazon wala, correct? If this moment will give you more. So actually, that is a movement which really, that movement, that day, the day before, we know that this news is going to come out, right? I should Right. have bought both calls and puts of something, right? Put equal amount in both. No, but what we he's should saying have is made- that one movement comes maybe one in like Once for in a 10 1 month. months or 20 months. Yeah. Yeah, You but cannot the predict thing is, that. we know that there will be a big movement, right? With the नहीं, CPI नहीं, data, guarantee everyone नहीं was होता. waiting. Okay. Now imagine you have bought put here. Story completely changes. Yeah. You're gone next day. There is no chance. See, your Yeah. $10 premium is now $0.5. Now what happens is Sure. you will not save this $0.5. You will wish that Yeah, this but I would not 0.5 just should buy become puts 5. over there, right? I would buy both puts and calls because I anticipate a big move either direction. Yeah. So what should they? Abhi, let's get to the point. Abhi, okay, let's say if I take 93 call, right? But the chart overall since 15th, it looks like in a down trend. Do you think it makes sense to map those trend lines in the past 3 or 4 days and then follow Yes. them and kind of say, okay, this is where the Yes, it does. possibly Yes, it does. that's where it's going? Whenever see what we can do in tomorrow's session, what we can do, the first thing we need to get clear is your position sizing, right? That's the most key important part in the stock market. Without that, and no strategy can make you even a $1. Even if you understand the entire technical stuff, everything, you will not make a single dollar. If you don't know your position, if you don't know what you're doing, even when I got to know entire thing about the technical analysis and everything, I was still losing money unless I fix my position sizing. My grid and my fear should be balanced, right? My emotion should be aside. Then only I make money. Because if I have 100 rupees and I am putting 100 rupees, this is my entire capital. I know if this loses, I'll lose my psychological level, or I'll something, it will hamper my mental health if I lose this money. And if I put entire thing on something I don't know by listening to somebody else, this is not going to give you any rupee, 1 rupee profit as well. One day you will make 10,000 rupees, next day you will be losing 100,000 all. Makes sense. Because that's the reason we need to know what our position sizing is, what exactly our trading setup is, right? Actually, that's the particular session I wanted to take today, because these things are most important. If this thing is clear now, even if you're wrong, you will make money. I can tell you that. If you understand this, stock market is not game of this. Understanding, analyzing 50 charts, moving average, nothing. It's just a game of this. So what If do you understand think this is a psychology- mantra for position sizing? What do you think is do you recommend position sizing even in the stocks? Yes, Kind of don't go all in, stay in liquid, of course. liquid See, cash fund. Yeah. right. Unless and until you have somebody, like internal source, if you have the contacts directly to Tim Cook from the Apple or somebody, right? You go entirely 100% put into the Apple, right? Since we are not that, it is we can compare that Warren Buffett put 40%, right, in Apple, and his majority wealth is in Apple because he knew everybody from the Apple. He knew what exactly is happening in the company. He knew all the fundamentals. He had access to their financials even before he started investing because he had that big contacts, right? So he knew the bet that Apple will go up. Can we predict that? Do we have somebody in particular company like CEO level ka ho, ya fir director level ka ho, right? So in that case, do you think we should probably only risk maybe 10% of our portfolio on 5%. even, for example, calls 5%, I think. 5%. Diversification. And then let's say you put 5% and the stock substantially moved lower.
what would you Right. do? Will you add 5 to average it out, or what do you do next? First of all, I'll tell you, if you are buying a stock, right, there should be no stop loss, zero stop loss, no stop loss. Okay. Either you go become millionaire or you become zero in that stock. That is the reason I say you only invest 5%. Let's suppose if you have 100 rupees, you get 20 stocks in your portfolio to diversify, put 5 rupees in each. So if that 5 rupees becomes zero, it's okay. Other stocks can handle this 5 rupees because there might be stock who is up 20 rupees, right? By that time, from that 20, because we'll be picking the good quality stocks, right? If you're diversifying, and if you're doing the futures and options, if you're into the future, if you're into the options, if you do not put the stop loss, you will become zero, no matter what your capital is. Stop loss is the must. If you are trading, And are you still suggesting 30 minutes and that's it? If your strategy doesn't work, exit, yes, right? Don't sit in the calls or the puts. yes, correct, exactly. The only way to win in the market is to cut your losses and hold your winning positions. When you make money, you make big money. Let's suppose you're putting 5,000 rupees, right? Or $5,000 at trade. You should know if my stock or my terminal shows $500 loss, I am getting out. No matter what is showing on the chart. I don't care. Even if I see that it will go 10% up, if your discipline is that you are getting out at this $500, next day you make, and when you know, next day stock goes up. If you see $1,000 or $1,500, you have to make sure. Let's suppose if we work on 1:2 ratio, that if I'm losing $500, correct, I will not get out of the stock unless I get $1,000. So 500, let's suppose you put $5,000 there, right? This is 10 rupees downside movement, correct? $10. So you will get out only when you have the 20 rupees dollar movement. You will not get out of 15, 5, nothing. If you get this trading discipline, and if you, let's suppose at this particular thing, if you are even right 50% of the times, right, which is the normal probability, 50%, right? Either you will be right or you will be wrong. So what is the one thing that will make sure that you will make money in the market? That 10 days you were wrong, 10 days you were right, 10 days, right? You lost how much? $5,000. 10 days, how much you won? It's $10,000. So you will be at the end in a $5,000 profit. Because when you're losing small. And when you're winning big. That's the only way to make money in the market. There is no other way. No other trading way, no other indicator, nothing. If you don't know the... So you're saying you cut your losses. Yes. And that's why you're losing money small, but then when you're winning, you kind of let it run slightly more. Yes. And, obviously, let me tell you one practical example. Let me tell you. I think there is a problem, man. I can say, I will admit there is a problem with me. The problem is, like, for example, last time I put how much? Like, I think about $10,000 into Amazon calls, and then luckily that doubled, right? And then and I don't want to do that again now. Now that I got into 20s, right? The position sizing makes sense. And position sizing is probably the most important thing. It will keep you in the business. Correct. And it will let you win eventually, right? Correct. And you're right, stop losses as well. I think stop losses are also very important. Yeah, so let me if you want to learn anything from me now out of this, anything, it's not charts. If you learn just this one thing, position sizing, because I have seen consistent losses. I have been a loss-making trader for a quite long time, unless and until I fix this position sizing. And it happens with everybody. I tell you, it's not like it's something wrong with us. It's just a human psychology, right? Whenever we are in a profit, we are in a fear that I might lose this. So let me grab whatever I'm getting. And whenever we are in the losses, we get into the hope that I hope that this will go up. Something will happen. Something you don't know, and the then reason. Lose right? Everything. You don't know exactly. You have no reason, but you just have hope that it will go up. You have no reason to back it up. That why it will go up.
Just because whenever you put so much money into one stock now, if you're 100 rupees and if you have put 80 rupees now, you become biased towards that stock. You stop following the charts. You stop following. You only listen to those people who say that particular. Let's suppose take the example of Amazon. If you're in Amazon, if you have put all your money, you will only say only those person are good who are saying Amazon will go up. You will only listen to it because you want to listen to that, because you have become biased towards the stock because you have put a lot of money into it. So basically, idea here is whenever you are learning, only put the money which you think you can afford to lose. But see, if you have 100 rupees, you have put 5 rupees in the Amazon. You will not go and search 100 videos where Amazon will go tomorrow. You don't care because it's 5 rupees, right? It's just a 5% of your capital. And you cut loss as soon as you lose $1, so you still save $4. That most of the trade, how much I lose $2, $3. I'm fine with it. Let's suppose this multiplied. If you have 100K, right? You know, per day or per trade, I am only risking 2% of my capital. 2,000 is good for you, right? If you have 100K and you are willing to give out 2K, but for what? At least I want 5K out of the trade. Then only I'm ready to do. Then you will not be like sleepless at the night. You will understand the concept. See, okay, 2K is good for me. I can lose that money, right? Because this is only when you enter into particular stock. If I am entering here, I should not go and search on Google. I should not go and search on different groups or what will happen to Amazon. You have to analyze it here only. Once you are entered into the trade, it's either your stop loss or your target. Nothing in between. That's the only way you will make money as a trader. You see all the professional traders out there, they only work on the stop losses. They only hold their winners. And that is the reason. See, it's not like that. But then the problem with stop losses is you will be subject to the stop loss hunting now, right? Exactly. We are playing that game only. When what we are targeting is either we are targeting, if I am taking it here, right? I'm taking the buy position here, correct? I'm targeting these sellers. I'm not doing anything else. I know these sellers are there, they're sitting freely, and one stock goes here, these will get out, and I'll have my profit and I'll get out. Correct. But your idea should be very clear that where exactly I'm entering. That's what I call a story trading. Where exactly I'm entering, why I am entering into that particular stock, when I need to get out. See, on the upper side, it's very easy. You will be fearful. The stock goes here, here, here. You are on the edge, venture. But on the downside, you will sit very relaxed. Even if stock comes here, you will not cut. You will say, let's draw the line something. You will see this support as well. You will see यहाँ तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कहाँ जाएगा, अरे यहाँ तक आएगा, और कितना जाएगा, यहाँ तक आएगा, right? But you don't understand here is you could have stopped your losses here. Again, यहाँ से नीचे गया तब आपको लगता है कि नहीं यार अब हो गया, अब ये निकालना पड़ेगा. But at that time you have lost these points. Yeah. Even if I give you trade, right? Even if somebody else gives you trade, no matter who you follow, I'm not saying nobody is. Even if somebody is giving you any call, even he's 50% right, correct? You will still make money. You just need to find somebody who can give you calls who's 50% of the time right. You don't need a 90% of the time, 60, 70% of the time. If you handle your position sizing correctly, if you know what you're doing, if you know what your particular trading style is, what your setup is, and if you do not mess up with your rules, right, then you will make money. And only way to do is cut down your position. Just because you have 100 rupees. I think I'm going to take this one learning today very seriously, the position sizing. Because that's something I seriously am terrible. This is the throw everything in there. This is the psychology behind the trading. Is the only way to win in the trading. Otherwise, MACD, what do we say, Bollinger Band, I can make 10 or 15 indicators on my own name. That Vinayak's magic. It is nothing but a simple moving average. Nothing. I agree when you said all these Bollinger Bands and everything are literally they are forming after the stocks move in one direction, right? So people say, okay, the stock went outside the Bollinger Band and it will come back inside the Bollinger Band. That's bullshit. Basically, if stock moves outside the Bollinger Band is itself
expanding to engulf the Correct. stock, right? So So basically it will again come into the Bollinger Band only, na, if it is expanding. yeah, that does not make sense really. Yeah, but people also follow that, I guess, and they are making money. That's why more people are So following it. most people are making money with following indicators, right? You will not see them in the markets in the next 6 months. You will see only professional traders, right, who are treating the trading as a business, right? If you are treating the trading as a business, then you know, in business, you know, right? If I'm purchasing this for 100 rupees, I am not going to sell it for more less than 80 rupees. Correct? 80 rupees is ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. Then why are you taking it here? Why are you letting your thing go to zero? What sense does that make? See, 100 रुपए का स्टॉक 1 रुपए पे आया, correct? Now you are hoping कि वापस 100 रुपए पे चले जाएगा. There is no logic. Why it will go? There is only 1% chance. कभी कभी जाएगा वो. But that one, वो 1% के लिए आप 99% का रिस्क लोगे? You will not. And only way to learn this in the position sizing is cut down your position. कि अगर आप पहले अभी 100 रुपए में ट्रेड करते थे, if you used to trade in 100 rupees, now trade with 20 rupees only. You learning curve. Understand. First, try to, when the day I'll tell you, the day you will start cutting your losses now, I bet, I guarantee that you will start making money by that day. The day you will learn, I want to cut down at 90, and at 90, your emotions do not trigger, and you put the sell button. That yes, I agree that I am wrong. Even though उसके बाद ऊपर चले जाए, it's okay. You don't have to curse yourself. यार 5 मिनट रुक जाता. But whatever you have drawn right now is what people call is a stop loss hunting. Basically, let's say there are double bottoms, right? Correct. The next bottom might not be exactly at the level of double bottom, right? It might go slightly below because people have set up stop loss over there. And hedge funds wanted to sell so that those stop losses get triggered, and then they pump it, right? You understand what I'm saying? It's like the classic stop loss hunting. So that's why people are saying don't even set up stop losses. Just make it a mental thing that, okay, I will exit at this point and then exit. Not even set up stop loss. Initial level you cannot. So as a professional trader, I agree. You should not put stop losses, but only when you are mentally prepared. Only when you are mentally prepared. Initial levels. When you are mentally strong. You are mentally that strong that अगर stock 90 पे आता है तो मेरा हाथ अपने आप selling पे जाएगा और मैं बेच दूंगा. If you have that confidence. This does not happen because human psychology work against it. That we are always in a hope. That no, this will go. और कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा. Then suddenly that becomes ego. कि अभी तो बेचूंगा ही नहीं. अभी तो नहीं बेचूंगा. इतना नीचे चलेगा आप तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा. Correct. You sell only when आपका जब हिम्मत हार जाता है. And suddenly I have seen even traders are like अभी क्या कुछ बचा ही नहीं उसका. अभी क्या बेचूंगा. Right. Let it go to zero. Which you could save $100, you will not even save that because the stock market has hurt your ego. It has gone against you. So as a beginner, that's where hedge fund gets in, correct? Exactly. That's where hedge fund gets in. Where you lose all your hopes. कि अभी खत्म है, अभी कुछ नहीं. That's where when you sell your thing, that's where the hedge fund puts in the money. And again you start buying, and again they put the stock down. तो एक बार नहीं, दो बार आप दो बार एक बार नहीं, 4-5 बार अपने इमोशंस के साथ खेलते हैं, and then they take the stock up. जब आपका हिम्मत खत्म हो जाता है, at the time stop loss hunting basically works on that model only, right? अगर कोई stock ऊपर से नीचे आ रहा है, correct? Now if you see this here, right? Let's take an Amazon example. It went from $125 to $85. That's where the rich people have almost lost everything, and then that's where hedge fund gets in. Exactly. Now let's suppose, okay, if I enter into this particular point, correct? If I see this down move happening, correct? This is the start of the market, correct? ये one day बहुत छोटा time frame है. Hello. Anirudh, James, are you still there? Can you hear me?
Am I audible? Yeah, I can hear you. Hello, am I audible? Yes, yes. आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे तो आ रहा है. हाँ. हाँ. तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है ये कैंडल को देख के कि बराबर ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, somebody will buy it here, करेक्ट? तो उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इधर समवट नीचे. मार्केट में तुरंत उसका स्टॉप लॉस ले लिया, राइट? उसको बाहर निकाल दिया. अगेन अगेन मार्केट स्टार्टेड टेम्पटिंग कि कम हियर बाय मी. अगेन पीपल विल गो, राइट, एंड दे ट्राई टू बाय हियर. दैट अगेन मार्केट इज गोइंग अप, अगेन मार्केट केम डाउन. एंड कभी भी देखना, whenever big movement happens, it happens because of the stop loss. You see this candle, red candle, big red candle, it will not let you go. आपको निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट. एज अ बिगिनर तो बिल्कुल नहीं. सी यहाँ पे अगर किसी का स्टॉप लॉस है, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया उसको, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड. इफ यू होप हियर, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, इन ऑर्डर बुक में नहीं है, तो आप लोग समवेयर जाके यहाँ बुक करोगे. और भी कोई अगर क्या बोलते हैं महारथी होगा तो यहाँ पे बुक करेगा, वेट कर कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा. Like me and Anirudh. This is the classic story of my life, of my This is- trading life. No, you Yes. are Why the I example, can, same thing. exactly why I can relate is I was this guy a year back. I have made this mistake. I have lost a lot of money. I have lost my 4 month salary, 5 month salary into this in 1 week. So I also have learned from the hard way, and I got to know that this is the only way to win in the market. Cut your losses and hold your winner. Yeah, That's like the only simple mantra. example, Anirudh, like if you have cutted your 1,500 losses on Thursday itself, you might have saved $1,000, correct? Yeah, man. Let me take my example of Meta. When Meta broke 154, if I have sold at $500 loss, I might not be at $30,000 loss. It's just that my ego is no, I'm not selling it, not selling. When it broke the 154, that is a 1 year support. That is, stock is going down. I should not keep adding that. So when you are stick with your emotions, when you start loving your stock, don't love the stock. That's what he's saying. When you say I am right, I should be right, that's when things get fucked up. Exactly. Right. So, yeah, even just the fact that okay, you think it will go up in the next, you calculate the time. Let's say in the next 30 minutes, this is definitely going to go up. And in the 30 minutes, if it doesn't go up, you exit at the stop loss price, or even wait 30 minutes and just exit, right? Even that should probably help with this theta burning and stuff. But just holding the stock and the call price staying there, and eventually at the end of the day, maybe it dips and call price goes really bad. So SAB, I keep losing a lot of money. Let's not do options. I would suggest let's not do any options. First, when you don't know anything about the graph, dojis and all this thing, stop lossing hunting, anything. Why can't everybody stick to only stocks for next until you guys are all profitable? Exactly. See, the reason is option buying. Why people prefer option buying, right? Mostly retailers and newbie, because it is tempting. It is adventurous, right? Option buying is that even though you decide you will not do, you will find after 1 week you are again doing it. So there's no way around it, I believe. It's the only way to is discipline yourself. You cannot just say I will not trade, because if you do not trade, if you see somebody sharing something, your Amazon will go up, you will again go and you'll not buy stocks, you'll buy options. 101%. You'll come back again next week, or maybe next month, maybe next year, but you will. You can be away for 6 months and you can come back and again you will start option buying only, because it is tempting. Stock market is not the place for tempting people. It's not for those who jump. These are people are called like tortoises. In India we have कहानी रहता है ना वो कछुए और इसका जंप करने वाला like जो रहता है rabbit, उसका यहाँ पे कुछ नहीं चलता. Only tortoise win. Turtles जो रहते हैं ना वो जीतते हैं. Who knows कि धीरे धीरे से पैसा बनता है. Tortoise. The small tortoise will win the race. Whoever will hold it slowly. Because if you keep on jumping here and there, market will keep on calling you and throwing you away. Some people come out of the revenge.
and those are the worst traders. If market has taken your $10,000, some people come up with 50,000 this time. They are against here with the revenge कि मेरा 10 लिया अब मैं 20 लेके जाऊंगा इधर से. Eventually they will give this 50 also. Because they are not here for learning. They are not here to be professional traders. They are here to beat the market. You don't have to do that. All you have to do is learn, and you just have to be on the right side, right? On sometimes, or अरे even if विनायक, you're wrong, yeah, अरे विनायक, yeah. तुम मराठी आहे का? Oh, मराठी आहे मी. हो. ओके. कुठे मुंबईतून आहे का तू? नाही पुण्यातून आहे. पुण्यामध्ये. ओ ओके. राइट. ऍक्सेंट वरून कळत असतं. जेम्स की तो दोस्ती हो गई. जेम्स की लाइफ सेट हो गई. नाही थोडा ते मुंबई आणि पुण्याचं थोडं कॉम्बिनेशन आहे ना, त्यामुळे ते मुंबईमध्ये हमारे ऐसा हमारे को वैसे वैसे रहता है. अरे मजाक जस्ट किडिंग. मैं वाला जेम्स का तो लाइफ सेट हो गई. मैं क्या बोल रहा था, लेट्स टेक दिस इज द प्रोफेशनल लेवल. विनायक अब देख एवरीबॉडी स्टार्ट इंटरेस्टिंग इन दिस. इसको 4-5 सेशन में थोड़ा अच्छा लेके एटलीस्ट वी स्टार्ट ट्राई टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स. अपन एक काम करेंगे. अरे मैं ना वो मेटा में कुछ तो बड़ा मूव आने वाला दादाजी बोल रहा था ये हफ्ता. अच्छा. तो उसने बोला तो अगर मेटा निकाल प्लीज मेरे को. या मेटा दादाजी ने बोला मेटा में उसने क्या बोला, या तो ये हफ्ते मेटा 97 जाएगा या तो 121 जाएगा. देख मेरे को तो ग्राफ देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई गैप अप था. विनायक लास्ट टाइम याद है 124 का कोई गैप अप है. राइट. वो देख दादाजी ने बोला मेटा इज गोइंग टू मेक सम बिग मूव्स दिस वीक. तो दो मूव हो सकते हैं. 100 जाएगा, 101 या फिर 124 जाएगा. अब ये बता सकता है कंफर्म क्या जाएगा. Just a second. Give me one second. Guys. जेम्स 100 जाएगा या फिर 124 जाएगा. या दादाजी ने बोला आई एम वाचिंग मेटा वेरी closely. It's going to do something this week, either go up or either go down. अब अभी सुना क्या आपने? दादाजी ने बोला लास्ट वीडियो 19th आज का वीडियो में दादाजी ने बोला हफ्ते ही शोड अ वीकली चार्ट. आई डोंट नो इफ आई कैन, मैंने ग्रुप में डाल सकते हैं क्या वो उसने पोस्ट. हाँ तो मैं भेजता हूँ अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, चार्ट भेज रहा हूँ. दादाजी ने डाला अमेज़न स्टिल लुक बेरिश. कौन सा वीडियो है तेरा, कितने दिन वाला है, तारीख क्या है? फेड मिनट कम्स आउट ऑन वेडनेसडे, वो वाला है क्या? पाई का डाला है मैंने और दादाजी ने एक इसका मेटा का भेजा उसने. मैं मेटा का भी डाला है. दादाजी ने वीडियो का नाम क्या है? फेड मिनट्स कम्स आउट ऑन वेडनेसडे, वो वाला है क्या? 18th. हाँ ये वाला, हाँ बिल्कुल. स्पाई एसपीडीआर वाला है भाई. उसने स्पाई एसपीडीआर का भेजा. देख मैंने मेटा का चार्ट दिया, देख तेरे को बुलिंजर बैंड कैसा खुला है देख. राइट. तो उसमें उसने बोला कि मेटा इज गोइंग टू मेक अ बिग मूव. हाँ देखो ना, ये इसमें दिख रहा है कि वो 105.43 जा सकता है ट्रेंड लाइन टच के, या फिर वो सीधे 131 या 112 तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा. ये कंफर्म बता सकता है यार क्या जाएगा विनायक, क्या तोड़ने के लिए क्या ऊपर जाएगा. ये लास्ट टाइम भी इसने फ्राइडे को बताया था, सही हुआ था. तो 112.30 को एक पॉइंट था, 112.30 विनायक. हाँ राइट. अभी देखना वो इंट्राडे लेवल पे था. वीक के हिसाब से देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग पेंडिंग है जो कि नेटफ्लिक्स में भी हुआ था. राइट. ये गैप फिल तो सिमिलर लेवल पे यहाँ पे जाके मेटा वापस रिजेक्ट मार सकता है और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है. अगर ऊपर जाना है, नीचे जाना है तो ये वाला जो पॉइंट है 104 वाला, राइट, 104 वाला पॉइंट है. वहां तक धीरे धीरे आके यहाँ से तुरंत ड्रॉप कर सकता है एक बड़ा वाला. मोस्टली निकलने का चांस नहीं देगा इन द मेटा. इवन इफ इट हैज टू गो अप ना, मेटा इफ हैज टू गो अप, ये धीरे धीरे नहीं जाएगा. इट विल गो इन वन पर्टिकुलर मूव बिकॉज हाँ वही साला वही वो खुलेगा एकदम हाई पे खुलेगा साला, या खुलेगा एकदम लो पे खुलेगा. वो साला घुसने देगा ही नहीं हम लोग को. चांसेस ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार वो शायद तक 124 तक जाएगा फिर वो वापस 90 जाएगा. नहीं यार वो बोल नहीं सकते, वो नीचे जाके भी ऊपर आ सकते हैं. ऊपर जा इसके ऊपर अगर जाता है ना वो, तो इधर वो टाइम पास करेगा. एक बार 124 के ऊपर 125 वगैरह पे निकलता है ना, 124 के ऊपर नेक्स्ट 2 मंथ्स स्टॉक इज नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं 122 के ऊपर तो सोच ही नहीं रहा हूँ. 122 तक के ऊपर का तो ज्यादा गुंजाइश नहीं है.
लेकिन नहीं वो क्या बोल रहा है, एक बार वो ऊपर गया, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कम डाउन, वो घूमता रहेगा उधर। अच्छा ऐसा बोल रहा है कि मतलब नीचे नहीं हाँ आएगा। ऐसा मोस्टली हो सकता है कि यहाँ पे जाए थोड़ा, यहाँ पे आए, ऐसा ऐसा हो जाए, बट आई हाँ, डोंट वो थिंक नेटफ्लिक्स भी ऐसे किया साला, नेटफ्लिक्स ना ही पुट्स दे रहा है ना ही कॉल्स दे रहा है साला। यार वो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं कि फिर एक बार ऊपर चले जाते हैं तो वो वापस ऐसा हाँ, नहीं है। नॉर्मल उसका सीजन रहता है स्टॉक का। अगर यहाँ पे चले भी गए ना, देखो कॉल साइड्स आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, पुट सेलर्स आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, राइट, 13-14-15% का। अभी यहाँ पे जाके तुरंत पुट वालों को तो प्रॉफिट देगा नहीं मार्केट, राइट, कॉल वालों को दे दिया है। तो अभी ऑल टू बैलेंस इट आउट, इट विल ईट द प्रीमियम, करेक्ट। एक और चीज सिखाएगा क्या सबको यार, वो तो फिबोनाची वाला बनाता है ना, अभी इस स्टॉक में फिबोनाची वाला बना के दिखाएगा क्या? ठीक है, यार वो फिबोनाची फिबोनाची देखना चाहिए या लो स्टोकेस्टिक देखना चाहिए? दादाजी लो स्टोकेस्टिक देखता रहता है हमेशा साला। every indicator tells you the same thing in some or other way. I am I not a see. fan of indicators. I am not a fan of indicators. Every indicator, see, I'll put 5 indicators right now, and 5 of 5 indicators will tell you the same thing. Just it will have price point की एक बोलेगा इधर करो, एक बोलेगा इधर करो, क्या फर्क पड़ता है? Right. तेरा क्या फीलिंग कहता है इस वीक मार्केट क्या Indicators, फोड़ जा सकता है? yes, indicator, I only take indicator as a story कि indicator भी support कर रहा है. First I make my own theory, right, कि for this reason stock can go up, for this reason stock can go down, and indicators are also supporting my story. So for though they are never my primary reasons to take a stock, right, or take a trade, but yes, they have some supportory benefits, which I think that gives me more confidence on my trade. And mostly if I see the TV वगैरह में अगर देखता हूँ, right, for the stock trading, then I make sure कि the guy in the TV says opposite what I'm saying, so I am confirmed that I'll make money. जिम क्रैमर टाइप, इस जिम क्रेमर ब्रर बोला वो बेसिकली जिम क्रैमर जैसे इन्वर्स या साला, ये जो भी सो क्या बोलते हैं, जो प्राइस टारगेट देते हैं ना, ये आज बोला बाय रेटिंग दिया, उसका मतलब बेच दो स्टॉक। हाँ, उसका उल्टा होता है हमेशा। Whenever they give buy rating, just to sell, and when they give sell rating, टेस्ला का देख क्या बोला, टेस्ला यही बोला ना, टेस्ला इंडी बोला ट्रिपल होएगा, ये होएगा लौड़ा हुआ साला। अब कल का कोई स्ट्रैटेजी लगाना है विनायक कि अभी थोड़े 1-2 दिन शांत बैठ सकते हैं? अभी नहीं, जब पाए जाएगा ना 400 के ऊपर, या फिर 360 या 370 के नीचे, देखो 370 या 375 के नीचे हम लोग बेरिश साइड का थोड़ा सोच सकते हैं कि जितना भी नीचे साइड का मूव बचा है वो कल्टीवेट करे, या फिर 400 तक रुकना चाहिए कि हमको टॉप में मिल जाए वो। मतलब चॉपी मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि टॉप में घुस के नीचे का वेव पकड़ो, या नीचे का वेव पकड़ के ऊपर आओ, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब मोस्ट लाइक सर्फिंग, आपको बस उधर बस में जाके बैठना है, यू हैव टू सी। देखो हम लोग तो मार्केट को हिला नहीं सकते, ये लोग हिला रहे हैं बराबर, ये लोग बिल्कुल झगड़ा कर रहे हैं, वी जस्ट हैव टू सी कौन जीत रहा है और उसकी बस में जाके बैठना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि कल को साला ये घूम फिर के सीधा वो वेट करे, टाइम बर्न करके ये 395 से ही नीचे चले जाए, राइट? आई मीन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 400 टच करेगा दोबारा, राइट? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन व्हाई विल आई टेक द रिस्क? $4 का भी रिस्क क्यों लूं? समझ गया। आई एग्री, आई टोटली एग्री। कंफर्म ट्रेंड नहीं हो जाए तब तक बस में नहीं बैठने का। दादाजी भी यही बोला, दादाजी भी यही कर रहा है, सब वेट करो, सब लोग आराम से जाएगा, आराम से सब लोग जाएगा, एक ही बस में जाएगा सब लोग, पर वेट करो। हाँ एग्जैक्टली, सो इफ इट गोज डाउन इट्स ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रेड मिस हो जाएगा ना, पैसा तो नहीं जा रहा अकाउंट से, बिल्कुल ट्रेड मिस हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ ठीक है, यहाँ मैं नहीं पकड़ पाया तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, बाय कर लूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ये वाला ट्रेंड नहीं पकड़ पाया तो इट्स ओके, लेकिन आई एम नॉट गिविंग मार्केट अ सिंगल रुपी। No, but you're going to wait till it crosses 358, or you're going to wait till it goes down further below? See, what will I do here particularly? If I have a $100 to invest in this particular trade, correct? I'll see if it goes here on a 400. I'll see if I have some this pattern, something like this. I'll do 50%. Like I'll put $50 into the trade. That I'll either buy puts or I'll sell calls here, right? I'll sell in the money, correct? That I'll have some room for myself.
that I'll sell some 410, 420, 415, right? I'll be safe from my side. But even if I go wrong, I'll lose very little. But if I win, understand this. How much I'll lose? If it goes above this, I'll cut my stake. 416, okay, I was wrong. I'm getting out of the market. But if I am right, how much I'm winning? I'll hold it till here. Okay, कितना दिन लगेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, I'll hold. But I'll capture this moment. समझ गया. Correct. So when I'm losing, I lose this much. But for what? Why I'm risking this much money? For this. But if I take it from here only, then my risk to reward ratio becomes very less. No? It's 1:1. समझ गया. Because इसके ऊपर चले जाएगा तो आई नो ना थोड़ा भी तो ऊपर लाइक इफ मार्केट को अगर किसी को फंसाना है, राइट, किसी को अगर यहाँ पे एंट्री लेके उसको वापस उसको शॉप के नीचे आना है तो थोड़ा तो रूम देना पड़ेगा ना ऊपर की साइड पे. बिल्कुल. तो अभी देखना यहाँ पे कैसे हुआ था. यहाँ पे देखना थोड़ा और ऊपर चले गया था. करेक्ट. यहाँ पे थोड़ा और ऊपर चले गया था. यहाँ पे थोड़ा और ऊपर चले गया था इंट्राडे में. करेक्ट. अभी हमको ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसको बाद में देख रहे हैं. बट लाइव मार्केट में तो ये यहाँ तक दिख रहा होगा ना कैंडल ग्रीन वाला. बड़ा कैंडल. तो एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे ये 403 की कैंडल बनाएगा तो जाएगा तो ये 406, लेकिन कैंडल 403 की बनाएगा. सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो मैं वहां पे जब भी मेरे को कंफर्मेशन आएगा, देन आई विल आइदर सेल द कॉल्स और आई विल बाय द पुट्स. करेक्ट. वन ऑफ दीस थिंग्स. एंड इफ आई बाय दोस थिंग्स, ये एक और चीज में विनायक हमेशा बोलता है कि कंफर्मेशन होना चाहिए तो पुट्स में एंटर करने का. यू नो कि नेक्स्ट दिन वो वापस एक और थोड़ा सा अप ट्रेंड निकाल दे, उसमें पुट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाए. क्योंकि अगर यहाँ से भी मैं एंटर कर रहा हूँ, राइट, 50% दे रहा हूँ, और जैसे मेरे को पता है कि लोअर लोज बनना शुरू हो गए, करेक्ट, आई नो माय ट्रेंड इज कंफर्म, करेक्ट, दैट वी आर ऑन द राइट साइड, आई विल पुट अगेन माय 50%. इट्स ओके. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ से यहाँ मेरा $50 पे जो प्रॉफिट होने वाला था वो मिस कर दूंगा, लेकिन आई विल नॉट बी लूजिंग एनीथिंग. इट्स ओके टू टेक द लेस प्रॉफिट्स rather than losing your own capital, right? एक लास्ट ग्राफ खोल दे टीक्यू का, बस एक लास्ट ग्राफ खोल दे. दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी अपन फिर कल देखेंगे. अब देखिए ऊपर में कहां तक जा सकते हो और नीचे में क्या है, 19 या कुछ 1999 1990 कोई पॉइंट है या फिर 2130 कोई पॉइंट है. सॉरी, 1990 या 2130 क्या चांसेस? तो ये लग रहा है कि ये 2390 तक जाएगा वापस. डू यू थिंक ये कल या इस वीक में 2390 वापस जा सकता है? यस. देखिए ये स्पाई वाला मूवमेंट मैं बोल रहा हूँ आपको, सब स्पाई का जो पेंडिंग है, मेटा का जो पेंडिंग है, राइट, ये मार्केट एक साथ ही चलेगा. एवरीथिंग इज इन अ साइकिल. हाँ, एक साथ ही चलेगा. ये टीक्यू का भी एक साथ ही चलेगा. इफ इट हैज टू गो टू दिस लेवल. अगर आप देखोगे मार्केट एक सिनर्जी में चलता है. इसमें भी इतना ही गैप बचा है, स्पाई में भी इतना ही गैप बचा है, नैस्डैक में भी इतना ही गैप बचा है. वो एक सिंक में चलेगा क्योंकि ऑल इज इन सिंक. मैक्रोस चलते हैं. हाँ, तो मैक्रोस में अगर चलता है, people are not happy. If people are not happy with this valuation, people's money will not go into anything. That will again deploy to the stock market, but to the different sectors. They might pull out their money from the tech stock and might buy some construction stock, might buy some healthcare stock, might buy something else. See, people have. It's not like the hedge funds are like they will remove their money and will sit with 1,000 crore in their bank, right? They will put it somewhere. If they are getting out of the meta, they must be entering somewhere, right? Because that's people money. They cannot sit idle with that. If you have given money to the hedge fund and hedge fund is not giving you any returns, you will ask question to the hedge fund, right? That why are you sitting with my money? अगर बैठना ही था तो मैं मेरे अकाउंट में लेके बैठ जाता ना पैसा. So they have to deploy it somewhere. We just have to find the sectors कि IT से निकल के वो लोग कहाँ जा रहे हैं and उनकी बस में वापस जाके बैठना है बस. Best stock to learn for any of the four James Anirudh is a United Healthcare stock. If you see that stock UNH, that is the best stock to learn because that stock always stays about 200-day moving average, and whenever it dips to 50-day moving average, some hedge fund start buying that. It is the best stock to learn it. If you are in the bullish, if you don't want a bear stock, that is the best bull stock to learn. If you learn that stock, right, but still execution is important, right? मैं तो learn करने की बात कर रहा हूँ. No, what I am saying is to learn any stock, how to stay, which stock is a super bullish. That stock is a super bullish stock.
एक बार खोलना ग्राफ विनायक, UNH किसका? UNH U अम्ब्रेला, हाँ हाँ ये वाला। अब इसका ग्राफ देख 5 साल का, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश रहता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख, I guess somebody was asking about the trend line. ये देख इसका ट्रेंड लाइन जो है ना अप ट्रेंड बन रहा है। हाँ, लेकिन देखना यहाँ पे if you see ना, this is the rejecting zone ना, this is not making higher highs. हाँ वो इस बार हो गया, इसका भी टाइम पूरा हो गया है। 5 साल से देख इसका ग्राफ। एक काम करते हैं, see on a very next session I guess we'll first get our trading setup and position sizing, right? We'll learn about that in next two sessions, right? Because those are big topics, right? Because that depends on सबका capital क्या है and what is their individual what we say appetite to take a risk, correct? So I think the next section will be on that for the next two sessions. Then we'll actually go to the charts where we'll learn about the candlestick patterns. Then I'll teach you guys 4 or 5 main patterns that I particularly trade on, right? Price action patterns. Some of like head and shoulder patterns are there, right? Channel patterns are there. Bullish flag is there, bearish flag is there. It's just a name. It sounds fancy, but it is so simple, right? So one session is enough for that. So to get started with, I guess we'll get started with the position sizing and psychology and basically risk appetite वाला जो session है, right? एक बार वो confirm हो जाए, कैसे trade लेना है वो एक बार confirm हो जाए, then we'll go to क्या trade लेना है. By the time you play, Okay. everybody play safe. Don't like lose patience or don't get into. Sure, bro. तो एक बार मैं वही बोला, एक बार वो अगर आप लोगों ने कर दिया ना, that कल का जो परसों का सेशन अपन लेंगे psychology on that part, you will understand that you are more at a peace now at the trading. Trading is stressful because most of people do not know the position sizing, right? They do big bets. Unless and until you have the conviction, you shouldn't do the big bets. You should only do something which is in your risk appetite. You can risk that money, right? And you can sleep peacefully, even if you lose that money. So guys, is timing perfect? This 10 o'clock until we find out the exact Vinayak. आज का जरा ज्यादा खींच गया, लेकिन कल से will keep only Yeah, in we will only 1 hour. keep it only for 1 hour. Is Anirudh and James perfect 1 hour for you? 10 to Yeah, 11? perfect है, yeah. Sure, bro. ठीक है। विनायक 1 to मैं कॉल सेटअप कर दूंगा डेली का 10 to 11 का, ठीक है। We will have only 1 hour starting tomorrow. Today वो लैम्प खर्चा गिर गया because everybody started Monday कल होने वाला है। It was necessary because सबके सारे questions थोड़े answer होने जरूरी थे ना. Either you should know that if it is for you, right? मैंने इसलिए देखो बोला था कि ये सेशन जो है ना मोस्टली वीकेंड में रखेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा वर्थ इट भी रहेगा, क्योंकि यार मंडे से कल से मॉर्निंग है, सबकी जॉब चालू भी होने वाली है, तो फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट आर द बेस्ट टाइम्स व्हेन पीपल आर फ्री। इफ थिंक एक काम कर लेंगे, दो घंटे के सेशन ले लेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ, बाकी वीकडेज में 1 आवर 30 मिनट्स का सेशन भी रहे तो भी चलेगा। बेसिकली जो अपन ने कवर मिस कर दिया है वो वीकेंड में कह सकते हैं। बेस्ट इज दैट कि हम सबको यार तेरे जैसा बनना है। बेसिकली द गोल इज दैट you have this kind of knowledge and we want this kind of knowledge to start executing. Don't like just playing in a casino. Basically this was just today was just an overview, right? What we can do in the market and how we can save ourselves in the market. So जो भी details में सीखना है, support and resistance या फिर charting, because directly हम लोग ऐसा jump नहीं कर सकते. If I directly try to teach you the trend line, you will miss a lot of things, because for that कैंडलस्टिक का नॉलेज होना जरूरी है, व्हाट चार्ट वो बनते कैसे है उसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट ऑल विल गो इन वेन। Anirudh, James, any more questions? What do you think? This is helpful for us, correct? हाँ यार, I mean it is helpful, but I think साला जब तक पैसा नहीं बनता तब तक yeah, everybody is like that until Vinayak, everybody is like until the money is not made, this all practical knowledge, theoretical knowledge is
just on papers only. Yeah. So Anirudh, do you also like do you also have like a paid service where you actually show us like or give us trades, or what? Are you also recommend trades, or you don't recommend trades, or you just go by price action and that's how you do give trade recommendations? Vinayak? Okay, you asking this to me, right? Yeah. Yeah. Okay. So what I particularly believe in, I can give out the views, overall my views, right? Because since our timing is different, you are in the US market, right? I am in the Indian market, and I have my own stuff going on here, so I might not be available all the time. Yes, to provide the trades, right? And because even if I provide the trades, I have to be there with you, right? For the stop losses and the other things. So I don't think I'm comfortable in doing that as of now. But yes, once if I get the time, correct, and if I'm free from other things, and if other things are going well, then I might think about it in the future, but not as of now. Okay, that makes sense. Thanks. I mean, Yeah. it's a simple, James. We market opens at 6:30. He might be eating lunch, dinner, or something with family. नहीं सही है, बात सही है, yeah. And we don't want to get stuck with his trades, correct? Because by the time we don't know stop losses and all that, and he is not there, then we will be really fucked. सही है. Practical knowledge एक बार पहले gain करते हैं, because the thing is that we don't know anything कि कब trigger घुसना कब है और निकलना कब है. We don't know that. It's better now that you yourself know, right? All these things. Even if you give handled account to somebody else, even you should know, right? What exactly यही is चीज doing in मैं the account. अनिरुद्ध और जेम्स को बोला कि rather than we rely on you, learn your knowledge so that at least we will not make by fool by some another companies. यार कोविड में क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जहाँ वो $100 लेते थे, $50 लेते थे, ट्रेड बताते थे. उसमें half of the time 20-30% तो ऑलरेडी हो चुका होता था. उसमें रिटेलर कुछ ज्यादा पैसा बनाते नहीं थे. And by the time you will always lose the money. So we don't want to do all this kind of trade now, where the action is already done. Correct. So it was So, nice, good training. I can stop the recording and people want to learn.